Welcome back to Chasing the Target. It's now 11 games played, 7 lost and 4 drew at home for Pakistan. The home काटने को आता बोला घर काटने को आ रहा वैसा हो गया पाकिस्तान के साथ. Unexpected after making 500 plus runs, you cannot lose a test match. It's unacceptable. Shan Masood came out, I think, very straightforward. Is like हम बेकार खेल रहे because there's nothing you can sort of run from, because the way they were batting, it looked like a flat wicket. We knew it was a flat wicket. Threw away wickets. I don't know why in the second innings they came out with an aggressive intent. They just started hitting and trying to get to that 260 whatever England would have England posted. But yeah, Mustafa, your take of all of these 5 days of cricket that we got to see. The pitch didn't break down to a very heavy extent. Overall, your analysis on this: where is Pakistan going wrong, and what do we do about Babar Azam? First of all, I want to put my hand up and apologize. I said that Pakistan will win this series and they'll win this. I mean, they can still win it, but right now it's all pointing the other way. Absolutely disappointing, disgusting, atrocious. It comes to a point where actually, I don't have any excuses left. Like, what do you want me to tell you? Like, it is, matlab, itna bakwas performance. आप 550 रन पहले इतनी थकी हुई पिच, उसके बाद आप बोल रहे रोडे उसके बाद रोड कोलैप्स ही हो गई एकदम से ठाक बोल के आप इंटरसेक्शन देख के क्रैश हो गए एंड जस्ट यू गॉट स्क्रूड. आई मीन व्हाट डू यू वांट मी टू टेल यू? इट वाज very poor from the start. Look, they batted well, 550, but then after that, the way England ripped them apart, Harry broke triple 100, Joe Root 200, and then man, 1.5 days. ऐसा नहीं है कि पिच एकदम से खराब हो गया, right? Like अगर England मार रही like 800 रन, मतलब they hit how much? Almost 400 on day 4. So if they hit almost 400 on day 4, that means एकदम से collapse नहीं हुई pitch. आपकी batting intent नहीं थी, आप डर के खेल रहे थे. बाबर, I know 1 or 2 balls were going up and down, but like the commentator said, it happened with England as well. You just have to take that ball outside of your memory and then just continue to bat. They didn't do that. They just kept getting worried and they looked very tentative. Babar Azam, I don't know what to say, man. I just like this too shall pass. That's all I can say. There's nothing else. Like he is in poor form right now. It happens with players. We hope that he can come back. Like right now, there's no excuses, and this is getting from. मैं अटका की कौन अटकेगी? एक मिनट, आई थिंक मुस्तफा भाई. Sorry, I went out. Can you hear me? Yeah, I think I got stuck in the middle. Yeah, go ahead. नहीं, पिछले साल से हम लोग साथ में देख रहे पाकिस्तान क्रिकेट और कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रही है. इट्स गेटिंग वर्स एंड वर्स एंड वर्स एंड दिस इज लाइक आई डोंट नो आप क्रिकेट को दफना रहे वहां पे या क्या कर रहे, लेकिन इट इज सो डिसअपॉइंटिंग. ब्रो, हाउ कैन यू हिट 550 एंड लूज द गेम, ब्रो? नॉट इवन ड्रॉ, लूज द गेम. पाकिस्तान, बांग्लादेश से भी आप ऐसी हारे. Yeah, no, it's a new start as the first team to do that. They lost after hitting. I'm not making a joke, but this is genuinely the case that after scoring 500 runs, is the first team to lose. And देखो बांग्लादेश के साथ भी यही हुआ. आप डिक्लेयर करके हारे. How are you doing this? Like आपको इतना अगर कॉन्फिडेंस है अपने बॉलिंग पे, शाहीन शाह अफरीदी को भाई माउंटेन में भेज दो, उसको रिकवरी कर लेने दो. 132 डाल रहा बंदा, 132. अबरार बुखार में मर गया ब्रो. अबरार इज गॉट टू द हॉस्पिटल बिकॉज ऑफ मुस्तफी नो, हम सऊदी में पड़े हुए, हीट कितना बुरा अपने को अटैक करती, नोज ब्लीड होते, क्या नहीं होता. अबरार बुखार में बेचारा हॉस्पिटलाइज हो गया. लाइक दैट्स द वे यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दीस कंडीशंस आर नॉट हेल्पिंग योर बॉलर्स, दे आर नॉट हेल्पिंग एनीवन. ब्रो, इंग्लैंड को जैसा आप बोले, दे आर गोइंग टू आइदर गो फॉर इट. दे वेंट फॉर इट एवरी मोमेंट एंड देन यू ड्रॉप lolly catches of Joe Root on deep mid wicket and you're expecting that he's not going to take advantage of it. Come on, like थोड़ा लॉजिक आप डालो अपने टीम में. नए बॉलर्स जो है उनके गस एटकिंसन एंड ब्रेंडन कार्स जो तरीके से डाले भाई, जो फर्स्ट बॉल डाला उन्हें, आई थिंक दैट इज द ओनली लिस्टेड विकेट इंग्लैंड हैव टेकन. जो थोड़ा आउट स्विंग हुआ, देखो अब्दुल्ला शफीक क्या बॉल था भाई. वो भी शॉट फर्स्ट था, लाइक यार बॉल अच्छा था, लाइक बॉल थोड़ा मूव हो गया भाई बिकॉज नया बॉल था, सीम में से मूव हो गया. बट पॉइंट यही है कि भाई तुम 100 मार के, हाउ इज योर कॉन्फिडेंस ऑफ इन द सेकंड इनिंग्स? यू शुड बी मोर कॉन्फिडेंट ऑन दिस विकेट व्हेन यू हिट 100 ऑन दिस पिच. सो इट डजंट मेक सेंस कि भाई पाकिस्तान की क्रिकेट कहां जा रही. दो लाइक वी सी देयर, लाइक जेसन गिलेस्पी केम आउट, उन्होंने बोला कि भाई ये टीम में टैलेंट है, टैलेंट का प्रॉब्लम नहीं है. आप ये भी ध्यान में रखो कि
पूरी कोचिंग स्टाफ का थर्ड टेस्ट है ये, पूरी कोचिंग स्टाफ गैरी कर्स्टन के एरा से इट्स जस्ट द थर्ड टेस्ट. We don't see that there's a skill issue, but there is an issue of like they don't know how to get the match in their grasp. Moments पकड़ने नहीं आ रहे उनको, capturing and being attentive throughout the game नहीं आ रहा. So that's something definitely that they'll have to work on. But Shan Masood as well as a captain, I didn't expect that shot from him. Lollipop right in front to Zach Crawley, simple catches. And मतलब मेरे को थोड़ा ये समझ में नहीं आया कि पाकिस्तान were going with a more aggressive approach in the second innings. I didn't really understand why were they going after the ball. Yeah, very poor shots and I don't know, I don't have the reasoning for it. बेकार मैन पूरा. आप कोई प्लेयर नहीं छोड़ सकते. आप नसीम शाह को भी ले लो, आपका फेवरेट सबको ले लो. Like you cannot, like there is no excuse because I'll tell you why. Man, Gus Atkinson कितने टेस्ट खेला होगा फैज. आपका ये कार्ड्स, जेडन कार्ड्स कितने टेस्ट मैचेस खेला होगा. Like इन लोग आपको ऐसा like they're making you shake, they're making you dance on a wicket which is supposed to be a road which is. ब्रैंडन का तो फर्स्ट है. ब्रैंडन का तो फर्स्ट था. वही लाइक उसका फर्स्ट है, ठीक है. लाइक वो भी लाइक सो आप क्या कर रहे हैं मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है. लाइक देयर इज नो रूम फॉर एक्सक्यूज ईच एंड एवरी प्लेयर. हाउ इज नसीम शाह नॉट पिकिंग एज मेनी विकेट्स? हाउ शाहीन शाह अफरीदी नॉट पिकिंग एज मेनी विकेट्स एज दीस गाइस at home in home conditions? आपका तीसरा कौन बोले? आमिर जमाल. How is he not picking up wickets? Like I'm not like एक आध विकेट अच्छा कैच ले लिया ये वो, it doesn't matter bro. Everybody is inexcusable now. They have no excuses. Each player, बाबर से लेके शान मसूद से लेके हर जगह, everybody has been very disappointing. And look, we've been backing these players. हम लोग कितना तारीफ करते, ये करते वो करते, like no matter what, we're from India but we still we respect cricket and we do call when Pakistan do well, we appreciate it. हम ऐसा नहीं है कि अरे इंडिया के हम पाकिस्तान क्रिकेट नहीं देखते, नहीं हम देखते हैं. लेकिन अगर आप ऐसा क्रिकेट खेलेंगे of course we have to point it out and we have to criticize कि this is not good enough. और कितने बार भाई आप घर पे खेल रहे, घर पे आपके कंडीशंस है, जो मर्जी हो आप ऐसा परफॉर्मेंसेस दे रहे बैक टू बैक कि I don't know what to do. I feel really bad for their fans. That's all I can say. And also the fans also, they also, not all of them, but some of them also, like, they need to understand कि जब आप वो टाइम पे इतना तारीफ कर रहे थे ये प्लेयरों का, वही तो प्लेयर हैं. तो क्या गलत हुआ, क्या आप उन लोग को चनक के झाड़ पे चढ़ा दिए, या आप उन लोग को फेम ज्यादा दे दिए, या उन लोग आप फोकस नहीं कर रहे? वही तो प्लेयर है भाई. शाहीन तो भाई he was mimicking how he used to get विराट कोहली आउट, केएल राहुल आउट, वो सब कहाँ चले गया? नसीम शाह सूर्या कुमार को निकाला उसके डेब्यू पे, ये वो सब, उसके बाद कहाँ चले गए? They cannot play him. All these dialogues used to come. And now what? Like, it's I think वही problem है Pakistan cricket की. They live on moments and these moments will pass. You have to get achievements. There's a difference between moments में and there's a difference between achievements में. Achievement में यार you can't call like हाँ चलो फाइनल ला लिया आप, सेमीफाइनल, बट कप नहीं आया अभी तक आपके नंबर 1. नहीं, मगर पिछले साल से आपको एक मोमेंट भी नहीं मिल रहा. ये तो प्रॉब्लम है. आप वर्ल्ड कप से बाहर हो गए, ठीक है, उसके बाद आप न्यूजीलैंड आके सी टीम आके पेल दिया आपको, राइट? लाइक वो क्या 1-1-2-2 हुआ था. फिर आप टी20 वर्ल्ड कप के वहां पे यूएसए पेल दिया आपको. फिर उसके बाद आप बांग्लादेश आके मार दी, फिर इंग्लैंड आके मार दी. तो ये कब तक चल रहा है? लाइक अब तो मोमेंट ही नहीं मिल रहा. पहले आपको ऑस्ट्रेलिया मार दी, ऑस्ट्रेलिया घर में मार दी. लाइक वो तो सब आपको आप भाई आपका देखो पागल नहीं है. देखो जो यूट्यूब पे भी जो पुकारा करते हैं स्टफ लाइक दैट, सी लेजेंड्स का छोड़ दो, ठीक है, मैं समझ सकता हूँ वो इधर इधर होते हैं, बट इवन देयर यूट्यूबर्स दे मेक सेंस अगर आप बैठ के उनकी बात सुनो. यार थोड़ा बहुत एनिमेटेड रहते, बट दे नो व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट सर्टेन एक्सटेंट तक. भाई जो तरीके के उन्होंने बोल दिया, लाइक हर कोई बंदा बोल दिया. आई थिंक इट वाज वासे के चैनल पे अपन देख रहे थे, उन्होंने पूरा प्रेडिक्ट कर दिया ये होने वाला, ये होने वाला, ये वाला, हैरी ब्रो कैसा कर देंगे, उन्हें ऐसा कर, बिकॉज़ दे हैव सीन दिस टीम इन एंड आउट. जब आपके जो लोग बाहर से देख रहे तो बोर्ड क्या कर रही भाई, आपकी सिलेक्शन कम. आई डोंट थिंक शान मसूद को निकालना चाहिए. ऑनेस्टली इट विल बी अ डिबाकल. लाइक अगर आप शान मसूद को आप निकाल के आप नया कैप्टन को लाओगे, सऊद शकील अच्छा करा तो सऊद शकील, ये कैसा है, फर्स्ट रैंक आता है आपको, एक बैच मिलता है स्कूल में. मुस्तफा इंडिया में यूजुअली आपको एक फर्स्ट रैंक टॉपर ऑफ द क्लास बोल के मिलता है, एंड दैट गेट्स passed around. It's like the captaincy is like that. It's shame to say कि भाई जो भी अच्छा कर रहा फर्स्ट आप है तो आप आज कैप्टन. आप नहीं भाई, you need to make a system, you need to make a process, you need to make an understanding. शान मसूद, I think I respect उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बोल दिया कि भाई हम बेकार खेले, हम कुछ कर ही नहीं सकते. Like we have to work. The quality sides will get you the win, and that's exactly what's right. You see England is a quality side. अब हल्के में नहीं ले सकते उनको. आप समझ रहे कि आप पाकिस्तान में फ्लैट ट्रैक दें, आपका क्या एडवांटेज है आपको मालूम नहीं है. आपके बॉलर्स की क्वालिटी नहीं है. I don't know, man. Shaheen right now is one of the worst bowlers, very frank, because he's not able to do anything with the ball. Bichara, he's coming, and I don't blame him also, but he's just 132, 128. Amir Jamal is bowling 135, man.
आमिर जमाल will bowl 130. थोड़ा और अबरार को आप मसल बिल्ड करो तो अबरार वही तो बोल 120 रहा तक आ हूँ, जाएगा. लाइक अब वो क्या रीजन है? इज इट द इंजरी? इज इट आप उसको इतना चढ़ा दिए? ही वाजंट लाइक दैट वाज जस्ट लाइक जस्ट अ मोमेंट फॉर हिम. आई डोंट नो व्हाट इट इज. जवानी का जोश था. मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा, बिकॉज मैं भी एक टाइम पे उसको बहुत पसंद करता था, नसीम को भी पसंद करता था, मगर दोनों 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 मेरे को लाइक बकवास दिख रहे. लाइक पिछले एक साल से क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे. लाइक नॉट इवन देम, यू ऐड द अदर बॉलर्स टू द मिक्स, यू ऐड एनी प्लेयर टू द मिक्स, इवन देयर बैट्समैन, कोई भी कुछ नहीं कर रहा. तो लाइक एक मैच लगाना है रोहिला, एक मैच लगाना है ना, कोई 10 लोग 11 लोग को पकड़ो बाहर से, एक टीम फॉर्म को, और आई एम गारंटिंग यू ये टीम हार जाएगी. आई एम गारंटिंग यू ये टीम हार जाएगी. अब तो लाइक देयर इज नो एक्सक्यूजेस. एंड लुक, आई डोंट नो व्हाट द राइट. आप बोल रहे शान मसूद के साथ स्टिक करो, मैं ये भी नहीं बोल सकता स्टिक करो, ये भी नहीं बोल सकता स्टिक मत करो. मेरे को समझ में नहीं आ रहा. लाइक आई डोंट नो क्या करना है. लाइक बिकॉज आई हैव नेवर सीन पाकिस्तान क्रिकेट दिस लो. आई हैव सीन देम लूज मैचेस. Even at their peak, they've not won stuff. Like I've seen all that, लेकिन I've not seen them इतना बुरा performance एक साल में. I think जिस तरीके से it is like, yeah, I mean, if you're a Pakistan and a Manchester United fan, it's probably hell for you right now. That's all I can say. Like, yeah. I don't think, I know a few of my friends who are, and they're just depressed. What can you do? Like, there is nothing you can do right now. No from escape, Pakistan. Yeah. आप सीधा सीधा देखो, आप दो रूट से, आप न तो ये स्टिक करते जाओ, बैक करते जाओ एंड होप दैट समथिंग हैपेंस, या आप निकाल दो प्लेयरों को, निकाल के आप अगर निकालो 2-3 प्लेयर को निकालो, बड़े यंगस्टर्स को लेके आओ, और फिर आप चेंज कर दो बड़े, मतलब exactly. आप शाहीन, बाबर और आपके निकाल दो, रिजवान को निकाल दो, एंड देन आप नई टीम के साथ खेलो. अगर आपको भरोसा है कि चेंज कुछ होगा, कप्तान चेंज कर दो और फिर यही प्लेयर को लेके जाओ. बट आई डोंट नो क्या होने वाला, बिकॉज नाउ इट्स जस्ट गेटिंग बैक टू वर्स्ट. यू आर नॉट इवन विनिंग गेम्स एट होम, ब्रो. लाइक it's very sad to see. And 2022 से नहीं जीते भाई. 2022 and you're saying road है पूरे अपने. बना रहे कौन भाई? आप ही बना रहे. और फिर आप हार जा रहे हैं. एटलीस्ट ड्रॉ तो कर दो. फिर आप मेरे साथ लड़ सकते हैं. फर्स्ट यू कैन आर्ग्यू विद मी, which you love to. You can tell me कि भाई if they do a turning wicket हार जाएंगे, एटलीस्ट इससे ड्रॉ हो रहा है. ये भी नहीं हो रहा. ये भी ब्रो, फ्लैट विकेट. करे तो करेगा, जाए तो जाए, क्या हमारा मसला हो जा रहा पाकिस्तान. अगर आप 500 आप 550 ले लो पहले इनिंग में, ठीक है, आप 2 दिन खेल लिए. अब दिस इज नॉट द बेस्ट वे टू ड्रॉ अ गेम, देन व्हाट इज? Yeah, 100%. I mean, England got 20 wickets, man. How? 800 मार दिए, मेरे को समझ में नहीं आ रहा. 800 मार के 20 विकेट ले लिए. और सबसे बड़ी बात है, ये उनके कंडीशंस है ही नहीं नेचुरली. ये मतलब कोई इतने इनएक्सपीरियंस बॉलर्स हैं उन लोग के, भाई मैं आपको बता नहीं सकता. इट्स वेरी डिफिकल्ट इन दोस कंडीशंस. आप जैसा बोल रहे हैं अबरार हॉस्पिटल चले गया, इवन दे कुड हैव गॉन टू द हॉस्पिटल. इट इज टफ कंडीशंस. देयर इज नथिंग इन फॉर द बॉलर्स. यू हैव टू बोल लॉन्ग आवर्स. इट इज हॉट ओवर देयर इन मुल्तान. और उसके ऊपर आप उनके पास अंदाजा नहीं है कैसा बॉलिंग करना है, मगर उन लोग निकाल लिए 20 विकेट निकाल के चले गए. एंड वो भी आप डिक्लेयर नहीं करे. 500 मार का ऑल आउट हुए, राइट? उसमें भी कैचेस ड्रॉप भी करे ना, जस्ट टू गिव अ लिटिल बिट ऑफ रिस्पेक्ट. और फिर कल भी ड्रॉप करे थे, शान मसूद को 2-3 वक्त ड्रॉप करे. फिर भी आप देखो, they managed to take all their wickets and that's what it is. ऐसा नहीं था कि crumbled, broke, pitch में क्रैक दिख रहा आपको, हाँ थोड़े आगे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं था कि अनप्लेएबल विकेट थी. हाँ लो हो रहा था, आई रियलाइज इट, बट लाइक जो कमेंटेटर मुस्तफा बोले कि भाई यू सेट एंड फॉरगेट, लाइक ठीक है हो गया, वो एक बॉल था, आ गया वेवर्ड. बट यू कांट से कि हम उसी बॉल पे आउट होंगे, उसी बॉल पे हम एक जमाने में पैड अप करते थे, देख वैसे दीवाने बॉल उनको लाइक आप पैड घुसा के आप अवॉइड कर लेते थे. बट यार लाइक दिस इज नॉट बिकॉज लाइक अभी का है, चलो बांग्लादेश से, बट इट इज लाइक continuous process हो रहा पाकिस्तान के साथ. They don't know their team. This whole management doesn't know their team. I feel bad for Gary Kirsten and Jason Gillespie. Like they're like Kirsten in the coaching industry is one of the top, man. He won India the World Cup. Like उसको अगर आप ये team के साथ you're seeing him struggle, then there's something very wrong with this team. And I mean Jason Gillespie, an experienced fast bowler, he's not able to get the best out of them. तो कुछ तो मसला है, या तो players नहीं सुनना चाह रहे, या समझ में नहीं आ रहा, या मैनेजमेंट और कैप्टन में कुछ अनबन है यार. इट डजंट ऐड अप. एंड अगर आप 500 मार रहे हो, अगर आप 300 एक दिन में मार रहे हो, और आप अच्छा, यू स्टार्टेड ऑफ वेरी गुड, चलो eliminate the wicket for 1 minute, 396, you put up a good score, 500 plus score, 515, 520, whatever you put, and then you asked England to come to bat. You should be confident to pick wickets in your home conditions, which you're not. So there's something definitely wrong over there. Fielding has been poor. Extra protection in the gullies and
डीप जो जरूरत नहीं है आप थोड़ी अटैकिंग फील्ड रखो भाई, प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा डराओ बैट्समैन को, बट बैट्समैन के लिए आप उधर उधर बाउंड्री पर रखते रहे। उन्हें ब्रुक जो निकल के मारा, जो रूट निकल के मारा, ऐसे ऐसे शॉट्स मारा मैं लाइफ में नहीं देखा। Yeah, it's just a sad state of things and you can't say अब अगला टेस्ट भी यही है आपका, अगला टेस्ट भी मुल्तान में ही है by the way, so you have to get ready for another road. Are you going to change the thing? Do you have the the gut to change? So you have to put cracks into it, you have to do something, you've got to doctor it, man. Yeah, I don't and know if what you do, that's what I'm saying. If you're losing already, if you lose on that, then whatever. Like at least like there's a chance to win. Like go play on the opposition's weakness. And like I'll be very honest with you. Gary, Kush, and Gillespie, I have no sympathy at all with them because they knew what they were coming into. उनको मालूम था जब job लिए थे. उसके बाद and जो भी है like Pakistan is at its worst, this and that. You still with that team, you can't tell me you can't beat USA. And you can't beat Bangladesh, no matter what. They're also to blame. Maybe not as much as the players here. Well, that's just my perspective. I don't have any sympathy because of like, yeah, ठीक है, he did great things with India. This is a different project, different team. आप अगर वो results नहीं लेके आ रहे वर्ल्ड कप जैसा, ठीक है, मगर एटलीस्ट आप यूएसए तो नहीं हारना, राइट? लाइक अब वो टाइम पे कोच कौन था? गैरी कर्स्टन had only 2-3 days. 13 days कुछ give me 30 seconds. I'll give you 30 seconds to USA. That should be enough, bro. Like you should not be losing to USA with that team. Like I'll be very fair with you. Yeah. And then I mean, I'm not trying to say that it's their fault. Yeah, it's not like that. Lekin magar I don't have that much sympathy because they knew. Why did you take the job if you knew that ki aisa hone wala hai? Yeah, like if the players are like this, they're not going to think. At least okay, this series, ठीक है, like but now you like the Bangladesh series, I'll take you there. I'll take you to the USA. These are not games that you should be losing at all, man, by any stretch of the match, whoever the coach is. Yeah, but also like if you see ऐसा कोई major improvement भी नहीं है प्लेयरों के mentality में या intent में आप देखो, so that's also something that you have to question. हाँ, South Shakil is the only guy that I really like in this test. He manages to make runs for them always. He's like a savior for them. But again, I don't think the answer is to change the captaincy, to try something new, and it's not always going to help that you try to evade a problem just by putting in another problem. बोलते देखो to like people say कि भाई आप sports को as a distraction डालते या Bollywood as a distraction डालते, similarly आप captaincy change करते to just get distraction of the people. अरे अब ये हमारा नहीं होगा, that's not going to fix the problem. Problem अंदर से है, problem mentality में, problem intent में, problem understanding of it. भाई domestic से लाओ भाई, कितने बच्चे वहाँ खेल रहे भाई, under emerging में कितने प्यारे बच्चे तैयार हो, धानी and the spinner that we spoke about, Sufyan and Mohammad Haris are इतना अच्छा wicket keeping batsman है, but नहीं उसको नहीं ला रहे आप. Rizwan can't play like test cricket अगर ऐसा रहा तो, like it doesn't look like he play test cricket, and it's the reality कि भाई they're really in a big problem. It's not going to fix by just changing your captain. It has to be done like कोई या तो ऐसा सिर फिरा आना कि भाई सबको लकड़े लेके मारने वाला होना, yeah, it's just going to be the same thing. And if they lose the second test, and then the problem is then they expect their fans to come and watch the game. No one will go, man. No, but the thing is, the problem is if you keep losing like this, there will be change, and unfortunately or fortunately, there will be like changes. Whether it's the coaching, whether it's the captain, whether it's the team, because it's a result-oriented business. इतना patience रखेंगे नहीं. Like team, like I understand the team. आप सही बोल रहे, team को change करो भाई. 11 में निकालो, बाबर को निकालो अगर जरूरत पड़ी, रिजवान को तो निकालो भाई. Take out what's his name? I mean, I think Salman Agha, South Shakil are only two people. Bowling में changes करो, major changes करो. मोहम्मद हारिस को लाओ भाई, सॉरी वो वसीम जूनियर को लाओ, उन्हें कहाँ चले गया बेचारा, उन्हें भी अच्छा डाल रहा था बीच में. आप वसीम जूनियर को yeah, I mean this is like it also depends on how much patience you have as and how much pressure there is and everything. That is also like I don't know what it is right now though. The way they are doing it, they haven't. ठीक है, कैप्टन चेंज करे उन लोग, बाबर को निकाल के उसको लेके आए एंड स्टफ, बट बाबर हैड अ बिग विंडो एज कैप्टन, लाइक 2-3 साल करा उन्हें कप्तानी, मगर नाउ इट्स टाइम दैट यू लुक एट द प्लेयर्स, यू स्टार्ट चेंजिंग देम अप बिकॉज़ यू हैव टू कम टू सम सॉर्ट ऑफ फॉर्मूला, राइट? अगर आप ये प्लेयर डिलीवर नहीं कर रहे हैं आपके लिए तो आपको कहीं ना कहीं तो चेंज करना पड़ेगा. लाइक मैं आप जो बोल रहे हैं कांस्टेंट चीज क्या उसमें, जो प्लेयर्स हैं सेम ऑल थ्रू आउट द ईयर, नसीम शाहीन, नवाज या जो भी दूसरे हैं, शादाब, ये वो, अरे यार सेम constant figures यही है, तो change करो. That's the only answer probably. And the thing is also the fans, like they were so obsessed India को beat करना and all that.
आप like you have to look at the biggest picture. आप 150 for no loss कर दिए, ठीक है, like मगर वो एक मैच कितना याद रखेंगे आप? Like you have to look at the team. Exactly. At that time you should have seen, no man, we lost to Australia in the semi-final. Why did we lose? The captaincy was bad, the players didn't perform under pressure. Now we have to improve the next thing. अब next में क्या हुआ? South Africa आपको अंदर करा दी by losing to Zimbabwe. आपको luck मिल गया, ठीक है, Zimbabwe played well, whatever, आपको luck मिल गया, आप फाइनल पहुंच गए, फिर भी वही फाइनल में क्या हुआ? आप हार गए. No, okay, we lost to England and think, but you're also being satisfied with mediocrity as a fan, right? You have to also say, Exactly. no, where did we make the mistakes? How do we get the cup? That's how you have to look at it, right? That, I think that's how you have to look at it as well. Like, yes, you can be proud of the players. There's no problem in that. Like, at that time, if you're fully satisfied and you're just trying to trash another team by saying that no, at least we did better than them, हम खुश है, वैसा मेंटालिटी तो पर आप कहीं भी नहीं जाएंगे. और यही हुआ. अब वही फैन जो बोल रहे कि भाई बाबर को निकालो, उसको निकालो, उसके तो तारीफा कर रहे थे जब 150 for no loss था. जब तो नहीं बोल रहे थे कि बाबर ऐसा है वैसा है. वहां पे तो उसके क्लियर वीकनेसेस थे उसके कप्तानी. मैं खुद ग्राउंड पे था, मैं देखा उन्हें जिस तरीके से ही लॉस्ट हिज शिट अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया. वो मैच जीतने का था. मैच विकेट ड्रॉप हुआ, उसके बाद एक कैच ड्रॉप हुआ, पूरा मैच खत्म. भाई उन्हें रिवर्स स्वीप, ये वो, मेरे सामने स्वीपा मार रहा है उन्हें शाहीन को, आपका वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर जो not play him. So वहां पे भी आपकी weaknesses थे. So you have to look at, I'm not saying to heavily criticize, but you have to look at where you can improve. You're just satisfied with beating India, it's not going to work. So as a fan also, now you're being, you have to pay for that. Like, आपका यही गोल था भाई इंडिया से आगे जाना है, मगर you have to look at the whole thing. It's not just about India or anything. And again आप ये देखो कि चलो भाई आप एक फॉर्मेट में लैग करे, आप हर फॉर्मेट में लैग करे. इट्स लाइक आपका 23 वर्ल्ड कप कौन सा अच्छा था? 23 वर्ल्ड कप फिर ग्रेस पे आने वाले थे आप साउथ अफ्रीका. अरे भाई वो डीआरएस का नहीं हुआ भाई, अलग बॉल आने, अरे नहीं दे रहे भाई कोई भी अलग बॉल. आपकी क्रिकेट अच्छी नहीं थी भाई. आपको जो एक्सपेक्टेशन सेट, आप इंडिया से भी आप अच्छा बिल्ड कर रहे थे. बाबर इज वन, फिर आप कुलदीप आपको आउट कर दिया, एंड देन अगेन आप फिर वो 200 के अंदर में पैक हो गए थे. सो दैट्स द थिंग, लाइक यू हैव टू सी, इट्स नॉट वन फॉर्मेट, इट्स नॉट, it's every format and it's the constant same players, every format same players. सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है आपकी. the only difference is साउथ शकील आ जाता टेस्ट में, वरना इट्स द सेम थिंग. अब्दुल्ला शफी को कभी आप खिलाते कभी नहीं खिलाते, तो वो कांस्टेंट फैक्टर यही है कि आप प्लेयर्स को चेंज करो, फ्रेश ब्रेथ लाओ, थोड़े बहुत डोमेस्टिक से लाओ. आप इतने टूर्नामेंट्स कराते विद इन द कंट्री, आप पीएसएल कराते, आप ये अपने अभी जो वनडे कप था जो भी था, जो शादाब की टीम जीते, आप वो कराते. आपका खुद कायदे आजम क्या क्या की फर्स्ट क्लास क्रिकेट है, आप उसमें से निकालो भाई, तराशो. बट nobody wants to go to the domestic, nobody wants to pick the high tier. India had done a very big change before they've come to this state. Man, 2003 to 4 इंडिया को भी मारते थे भाई, बट इंडिया मेंटालिटी चेंज करे कि हम ऑस्ट्रेलिया से बेटर कर लिए, वो एक टाइम पे था कि हम ऑस्ट्रेलिया से बेटर कर. बट दैट्स नॉट गोना हेल्प. यू हैव टू achieve high. To achieve higher, you have to look high, like look at something more than just winning 1 or 2 games or a string of games. And you have to also, like India की 2023 क्रिकेट इतनी अच्छी थी कि it sort of would balance, cushioned the blow of losing. कि भाई हाँ चलो, क्वालिटी ऑफ क्रिकेट वाज राइट. यहाँ पे क्वालिटी ऑफ क्रिकेट नहीं है, जस्ट वो एक बच्चा है जो फेल होते जा रहा है एग्जाम में, वो एक एग्जाम में पास हो जाता तो पूरी मिठाइयाँ बांट रहे. इट डजंट मेक सेंस. You've got to raise the bar in the cricket, you've got to raise the bar in fitness तो भाई कहीं से नहीं दिख रही. And you've got to start separating your format, separating your team. शाहीन को like सही बोल रहा हूँ मैं, like बैटमैन के जैसे कोई माउंटेन में भेज के उसको रिकवर करा के लाओ. He's done bro, like 132 128, your main bowler bro, he can't be bowling that. एंड आप लाइक ये जो मैं अफगानिस्तान का एग्जांपल देना चाह रहा हूँ, उसमें आप देखो वहां पे भी पॉलिटिक्स बहुत रहते हैं. आप देखो कप्तानी कितनी बार चेंज कर रहे हैं उन लोग, प्रॉब्लम्स हो रहे थे एंड स्टफ लाइक दैट, बट देयर वाज नेवर दैट हाई एक्सपेक्टेशंस ऑफ देम. राशिद खान is the most probably like the most loved guy in Afghanistan. I don't know if he's, and I'm sure he's pretty powerful too, whatever, but like even in India bro. I have Afghanistani friends like in the Middle East, and they like just rave about him. They said like this guy is our king, like this guy is the main guy. इन्हें क्या, he gets humbled, उन्हें उसको भी मार पड़ती है, he goes to IPL matches, ऐसा नहीं है, कभी कभी रहता पॉलार्ड उसको 4 छक्के 5 छक्के मारा, but he keeps focusing on his game. And main thing when it comes to his country उन्हें सबको इकट्ठे लेके चलता, whether he is captain or not, right? And so that's what these guys have to learn. By आप एक मैच हरा दी इंडिया को, that doesn't mean you're like the greatest ever. Like for Afghanistan, they beat Pakistan. That was their biggest achievement in their history. They wanted that, like for their fans, their players, every single member in that country wanted to beat Pakistan. But what did they do after? They didn't go crazy. They went next, and then they smashed
Australia, right, in the T20 World Cup, and they reached the semi-final. So उन लोग रुके नहीं. So that's what if these guys are doing it, you don't have any excuse. Talent आपके पास भी है, player भी आपके पास है, मगर अगर आपके player ऐसा perform करेंगे, ऐसा attitude दिखाएंगे, तो फिर क्या फायदा? You have to look at these other countries. Don't even look at India. Don't even look at England, Australia. Look at Afghanistan. Look at Bangladesh, Sri Lanka. They're putting up better fights than you. Why is that the case? Why is it like that? Yeah. You have so much talent in your country. And also the funny thing, why are we putting them on this pedestal during World Cups and T20? Okay, they've got whatever result, but you actually have, like the way you put it, I think then Afghanistan and these guys deserve more respect. वो तो होने वाला है, but it's the players' duty to then focus. वो तो भाई हम भी करते हैं इंडियन प्लेयर के साथ. अगर उन्हें जैसे नीतीश कुमार रेड्डी को मैं पेडेस्टल पे डालता हूँ, अभिषेक शर्मा को मैं डालता हूँ. नहीं, I'm saying team ranking wise, अगर आप देखो पाकिस्तान का pathetic performance है, अब actually I would say now better odds of winning any World Cup game in Afghanistan rather than Pakistan. Yeah, मगर वो अब टाइम था, राइट? अभी वेरी रिसेंटली जहाँ पे इंडिया को हरा रहे थे, लाइक एशिया कप में भी हरा है, वर्ल्ड कप में भी हरा है इंडिया को, तो लाइक एक टाइम था. तो वो तो नेचुरली होएगा, बट इट्स द प्लेयर्स थिंग टू फोकस. उन लोग क्या है, अब दे स्टार्टेड चौड़ में आ गया कि भाई हम लोग एक चीज करें जो ना इंजमाम करा, ना वसीम अकरम करा, ना इमरान खान करा, कोई भी नहीं करे. हम लोग इंडिया को वर्ल्ड कप में हराए. अब ठीक है, गुड अचीवमेंट व्हाटएवर, बट लाइक दैट डजंट मीन यू जस्ट. बट अब ये बोल रहे कि इमरान खान, इंजमाम, आफरीदी इनला पूरे वर्ल्ड कप जीत के भी है. वो भी बोल रहे हैं. अब T20 वर्ल्ड कप इन्हें जीता, इनला 92 वर्ल्ड कप जीता. आप क्या जीत रहे? आप सिर्फ सेमीफाइनल फाइनल में वो पोडियम आता रेस जीते बाद आप थर्ड पे. मगर बिल्कुल वही बात है. दैट्स व्हाई दे हैव टू कम बैक एंड फोकस ऑन द गेम. मगर उन लोग वही चने के झाड़ में पहले तो फैंस ही चढ़ाए उन लोगों को. फैंस ही भाई, मैं ग्राउंड को गया, वहां पे 15 लोग वही लिखा हुआ है 150 for 0, 150 for 0. while the World Cup is happening, World Cup जीते भी नहीं अब अभी, और ये सब चल रहा था. तो the fans also do that thing. अब न्यूजीलैंड पाकिस्तान का मैच चल रहा, उसको फैन पूछ रहा शाइन को विराट को कैसा आउट करे, उन्हें दिखा रहा while the game is happening. फोकस ही नहीं है भाई. वो मैच जीत के न्यूजीलैंड के अगेंस्ट उन्हें आसिफ अली बचा दिया आपको, ठीक है, मगर अगर वो मैच हारे पक्का जबीच में गिन देता था. मगर ये तो मेरे सामने हो रहा शारजा में. These things, you're not focused enough. That where is your focus? आप ये moments पे quality of cricket आप expand कर ही नहीं रहे. It is not one place you can say कि हाँ भाई पाकिस्तान बेहतरीन, चल 2017 दे दिए, बेहतरीन क्रिकेट खेले, 2019 तक अच्छा था उनका वर्ल्ड कप, it wasn't bad, but उसके बाद से आपकी quality of बाबर was 2 years in a row 21-22 में cricketer of the year भाई. वो भी किस को मारा उन्हें सेंचुरी उधर. It was just runs के बेसिस पे था. अभी जो फिलहाल जो परफॉर्मेंसेस हो रहे हैं लगातार बैक टू बैक, आप क्या मतलब, ये तो नो वन इज गोना एक्सेप्ट इट. आप ये तो अगर ये इंडिया में होता तो क्या होता था? जस्ट आई एम नॉट कंपेयरिंग, आई एम जस्ट आस्किंग. पागल हो जाते थे भाई. They would have been red alarms going in the stadiums everywhere. Yeah, and Pakistanis are very passionate about cricket, very, very passionate. I have a lot of friends and stuff who just their life is cricket. उन लोग को इतना पसंद भाई, जॉब छोड़ देते, वो कर देते, मैच देखना है, पाकिस्तान का मैच है, क्रिकेट देखना है. They love it, but unfortunately if it's going to be like this, and आप बात कर रहे थे कि फैंस आएंगे, मैच देखेंगे, ये वो कोई भी आ रहा नहीं, because unfortunately कई को आएंगे भाई, कई को आएंगे. I mean they won't come. Why will they come? I mean, they're not getting anything in return if they're spending the hard yards in the stands. गर्मी में तब के कौन मरेगा भाई? पागल थोड़ी है कोई भी आके ये देखने के लिए. And that's the worst thing यही है कि to top it all off, these are all just home games जो हम लोग बोले. 11 matches, 7 defeats and 4 draws. How bad is that at home? That means that you're only making one type of pitch. That is a flat wicket, and that's not helping you. Understand this, it is not helping you. You have to play to some way which will ignite some kind of belief in your players कि हाँ भाई ये pitch हमें help कर रही. But आप flat wicket पे नहीं कर सकते. वो होएगा ही नहीं. So it doesn't make sense that this thing. Pakistan broke a record becoming the first team in history to score 500 plus and lose. Exactly. I mean, and this is what it is. They've declared they've done this also, but they've also been the team to declare and lose as well. So it's not like they're breaking good records. They're breaking records which don't make sense. And again, it comes down to the management, what their ideology is, what cricketing beliefs they have. They need to have major surgery there. They have to have major surgery in the 11 where they're bringing people from domestic, at least home के matches में आप domestic players को ला, because they have a better understanding than right now the national squad. I think right now जो national players आपके 11 जो थी आज,
ये आपके डोमेस्टिक प्लेयर मच बेटर खेल के आपको बता देंगे। बिल्कुल। अब मैं को तो समझ में नहीं आ रहा भाई, लाइक समझ से बाहर है, लाइक जो भी करना है करो, मगर ये नहीं मत करो, लाइक एटलीस्ट पहली चीज ये है कि पिच चेंज कर दो, ठीक है, उसके बाद स्पिनर को लेके आओ कहीं से भी, आई डोंट केयर इफ ही डजंट नो हु ही इज, जस्ट ब्रिंग हिम, प्ले ऑन द वीकनेस, भाई ट्राई शादाब को ला लो, भाई शादाब को ला लो, रिवर्स ट्राई टू शो इंटेंट कि हम जीतने जा रहे हैं। उसके बाद फिर आप ये बाबर को हटाना पड़ेगा, आपको रिजवान को हटाना पड़ेगा, शान को हटाना पड़ेगा। अब ये आप एक और मैच देंगे, 2 और मैच देंगे, वो नहीं, मारेगा, वो मारेगा फिर उसको रख देंगे। अब मेरे को वो पलटा के आप बोल सकते हैं कि भाई कल के दिन बाबर जिता दिया सीरीज इफ ही प्लेज द नेक्स्ट 2 games, बट right now it doesn't seem, because I'm backing this guy for the last 2 years, he hasn't done shit, man, like, so I don't know what... उन्हें 2016 से खेल रहा भाई क्रिकेट, 2016 से खेल रहा है क्रिकेट, 8 साल, you're a veteran in the industry now, you're a veteran now. This is supposed to be his peak. He's 29-30 years old. ये आपका peak है as a batter. This is the peak age. So अगर if it's now, then when, like you want to give him 2 more matches, sure, but then after that, are you going to make the decision that you're not going to send him for the South Africa series? You have to make that decision. Are you going to make the decision that he's not going to be in the Champions Trophy? अगर ये सीरीज नहीं जीते पाकिस्तान, तो फिर उन्हें लाइक उसका नहीं बनता जगह, राइट, लाइक अभी गिव हिम अ ब्रेक एंड देन लेट हिम, आई मीन ब्रेक, ड्रॉप हिम एंड लेट हिम गो एंड परफॉर्म इन डोमेस्टिक एंड देन कम बैक. Some people think drops are bad thing. I think sometimes for such people drops are a good thing because it gives them a reason to fight, right? Like it gives you a reason to reinvent yourself. That मैं गलत यार, 2023 वर्ल्ड कप में keep bringing his press conference, he said मैं मिस्टेक बना रहा हूँ, अब नहीं बनेंगे मिस्टेक्स. 2024 he said the same thing, मैं मिस्टेक बना रहा हूँ, अब नहीं बनाऊंगा मिस्टेक्स. भाई तुम मिस्टेक्स ही बना रहे हो बेबी, लाइक तुम ड्रॉप कैचेस भी कर रहे, you're ideally a fit guy, but you're making stupid mistakes. You dropped a lollipop with joeroot which extended a 60 runs that he already scored a double 100. You're not focusing on your ring, you're again leaning toward that outside off stump. So these are mistakes that are of the past, it's not like right now. So मेरे हिसाब से like you just give him time, let him reinvent himself, let him find his mistakes, let him come back stronger. कोई बुरी बात नहीं अगर आप ड्रॉप करें. Yeah, I agree. The problem is because he's beaten India in a World Cup and he has a trophy. He has a long क्या बोलते हैं, long cash span. That's why they're not dropping him. Like उन्हें पाकिस्तान के लिए ट्रॉफी जीत चुका है एंड उन्हें इंडिया को हराया, उसको वो बेसिस पे चला रहे हैं उसको, एंड ऑफ कोर्स ही हैज रन्स, ठीक है, बट जैसा आप बोले, अगर आई थिंक ही नीड्स टू ड्रॉप मार के फिर लेट हिम स्कोर रन्स एंड गेट बैक इनटू द टीम. ऐसा नहीं है कि अच्छा प्लेयर नहीं होने, अच्छा प्लेयर है, but like he has there has and also think about the players who are there also in your domestic system who are making, when will they get a chance? It will only be there when they are failing, and this is the appropriate time. भाई जो बच्चे वहाँ perform कर रहे हैं आपके trophies में, you know, just try to get them, even if they fail, it's not going to be any different from this. लाके तो देखो भाई क्या करते हो ना, मतलब इट्स इज थिंग, बट ओवरऑल लाइक इंग्लैंड मुस्तफा अगेन मैं आपको बोलता हूँ क्या होता है प्रॉब्लम ये अपने क्रिकेट में, इंडिया और पाकिस्तान क्रिकेट में, जब आप एक प्लेयर को ड्रॉप मारते हैं, राइट, और फिर रिजल्ट्स नहीं आता, फिर उसको बोलते हैं लेके आओ वापस, फिर बोलते हैं इन लोग कुछ भी नहीं कर रहे, सो इट्स अ वेरी थिंग, बट राइट नाउ आई एग्री दैट उसको ड्रॉप मार के लेके किसी को लेके आना पड़ेगा, अगर बिकॉज ये सब कितना चलेगा, राइट, आप कितना आ रहे. सॉरी, आप इंग्लैंड के बारे में बात कर रहे थे. इंग्लैंड क्या बोल रहा था, इंग्लैंड परफॉर्मिंग लाइक not a shock what they did. We know they were much more capable. 396 in a day. They went from 96 to like 392 in one day, and they have absolutely smashed it. Joe Root, Harry Brook, bettering like batting. It didn't look like they were disturbed for one moment in the game. Very unaggressive field from Pakistan again. But yeah, England, like their bowling lineup, after Anderson and Broad looks good. Yeah, I mean, I was not expecting them to play bowl like that. Like, I still thought कि draw हो जाएगा match, लेकिन जिस तरीके से you know, they bowled Cars, Atkinson, Bashir, Leach Wokes in the second innings, Wokes. And Wokes is not that good outside of England, like, but he developed his game. He bowled very well. उन लोगों के पास it was nothing. It was very difficult for them. Conditions अच्छे नहीं थे, लेकिन to get, I think, to restrict now we can say Pakistan to 550, and then you know, then to get them all out like that, I think incredible effort from them. I think second innings में जिस तरीके से उन लोग bowling करे, it was very very good. You know, from ball one they set the tone with that wicket of Abdullah Shafiq, and they never looked back. Yes, they're catching the drop catches, but I think this is going to happen in these kind of conditions in cricket. Yes, you don't want those catches to be dropped, but I think ये होने वाला है. But they didn't let it bog them down. They continued. Eventually, they got the wickets which they dropped. So very very good.
बेन डकेट यार दो फॉर्मेट तो सील कर दिया मेरे हिसाब से. द वे ही हैज बीन प्लेइंग इन द टेस्ट, वी ऑलरेडी सीन हिम इन द एशियल, वी सीन हिम, you know, he's raising the bar every time he's playing for England, but also the one T20s that we saw recently, smashing it like again 82 of 75, कुछ 111 का strike rate था उसका. तो बेन डकेट also, man, like he's becoming a proper player for England. Yes, Ben Ben Duckett, Duckett. yeah. Yeah, Yeah. 100%, man. He's been, and with the injury, right? Like, Yeah. Yeah, और with अच्छा मतलब catch वो किया, light injury था. yeah, slip में catch, जो catch Babar अच्छा. didn't really contribute to the 2017 Champions Trophy win. It was Fakhar and Azhar Ali, Sarfaraz, Hassan Ali, and Junaid Khan. Yeah, 100%. I think they're more banking on that, you know, Rizwan Babar, जो Even no loss मारा था. but the thing is, he was part of that squad. Then 2019, he did contribute. They didn't win. Then in 2021 against India, he scored Yeah. and he won. So like, I'm just saying, like he was part of that squad and everything. And at that time, there's a youngster coming up, and they think like it's like kind of. I'm sure like in 2011, Virat Kohli's contribution was more than his. It was in 2017, but still Virat Kohli was not big contribution, right, in 2011. But we still, he's part of that squad. He still won a World Cup. Yeah, when you ask him what do you need to win now, it's the WTC, because he's technically won the 50 over World Cup. Rohit Sharma didn't. So like that's like, you know, he can still say कि मेरे पास Champions Trophy है. It doesn't matter how much he contributed or didn't contribute, in my opinion, because that's what it is. That's what he's probably thinking, right? And at that time in 2019, the way he played, he scored 100, I think, in the chase against South Africa. Was it Ibrahim Bhai or New Zealand? I don't remember. So that gave him a lot of confidence, and then he became captain after that World Cup. And things look bright for him. Like, now it's gone to a new low, and let's see what happens. I mean, like again, considering उन्हें कब से खेल रहा भाई, उसको आप 4-8 साल से खिला रहे, एंड आप उसको, you know, चलो क्रिकेटर ऑफ द ईयर था, बट भाई यू कांट ऑलवेज लाइक, हम लोग वो मोमेंट्स में जीना छोड़ दो, आप आगे का सोचो, बड़ा सोचो भाई. एग्रेसिव इंटेंट नहीं दिखता मेरे को बाबर में. इज वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ हिज विकेट, लाइक समथिंग दैट आई हैव आल्सो नोटिस्ड. ही इज वेरी गुड ऑन द कवर ड्राइव, ही इज वेरी गुड ऑन द कट्स एंड स्टफ, बट व्हेन इट कम्स टू coming out, walking down the thing, Virat Kohli, you see, when he's in aggression mode, he will walk down the pitch and smash you. But this guy never does it. He's always behind the wicket, stuck to the wicket. He has a good game, but like it's just at moments he looks so worried to lose his wicket that he ends up losing it because of his own head. So that's something that he'll probably need to work on. Today, the women's T20 game is also there. Pakistan, Australia, big game for them. Unfortunately, I'm very sad that Fatima Sana Khan losing her father just before the game, and she's flown back to Pakistan to obviously, you know, जो भी funeral processions है उसको संभालने के लिए. But yeah, I mean, a very big loss for Pakistan women also, with the captain leaving just before a day of the game. Yeah, man, condolences to her and the family. And she was like, I watched her performances in the stadium. She was really good, man. One of the players to watch out for in this tournament, the way she played with bat and ball. She was fighting captaincy as well. And I think it's a huge loss for Pakistan, but like nothing comes, you know, before family first. So like condolences to her and her whole family. Yeah, 100%. And I mean, it will be playing with Pakistan's team psychologically, but they'll need to try and get a win, because obviously India is now 4 points with a better net run rate. Not too ahead of Pakistan on net run rate, but yeah, I think under her, maybe will it be Nida Dar who will take the captaincy? Any idea who's going to be the captain now? No, it's I think it's that girl, man, Mubina. I think Muniba, I yeah, think, the wicket keeper. Yeah, the I wicket think keeper. it's Yeah. her. Yeah. So then Muniba will fill in for absent Sana Fatima Khan, unfortunately, because of that. But yeah, Australia, very solid team, what we saw already throughout the World Cup right now. So I mean, you're favoring them right now to finish it off today and enter the semis. Yes, I am favoring them. I am favoring Australia to win this match. Agar Pakistan pull off an upset, then it blows the whole table wide open. And why not, man? Their men's team is struggling so much for their fans. If they can win, it'll be amazing. But I see it difficult, man. I think this Australia team is crazy. If Pakistan win today, there'll be something big to cheer about, because this is an amazing Australia team. I remember Babar hit 46 in the final against India in the Champions Trophy, so not bad contribution. So he was there. He was Brevis present. and Engedi have been announced for Bavuma and Bergen. I mean, Bavuma has to get dropped, man. Like, he's been in very bad. I mean, he's injured, I think, as well. But yeah, it's just been bad performances from him time in, time out. I mean, I'm so I'm not happy Brevis is there, man. He's my favorite. I'm very happy Deval Brevis is there. Rohit doubtful for test. Yeah, for personal reasons, he's going to be Oh, out. Vinay, what's up, man? Vinay, Harry Harron in the house.
Rohit will start. Who would take over according to you in terms of captaincy? Who's the vice captain? Shubman apparently, but not sure 100%. I don't know who the vice captain is. If you ask, if there is no vice captain, then Jasprit or he's Pant. already done it. Like, yeah, maybe Pant. I don't know. Like, Unless the big man takes it. Unless like maybe police suggest it's a one. Virat Kohli. Yeah, one off. Rohit Sharma is not personal reasons, huh? First Due to test. personal reasons, yeah. First or second, one of the two. This always happens with our captain going to Australia, man. Last So time it happened. Last time तो 4 टेस्ट चले गए थे विराट कोहली के because of personal reasons. अब वो पर्सनल रीजन है क्या, वो क्या रीजन है वो भी नहीं मालूम, बट या पर वो तो पर्सनल था. हाँ वो तो पर्सनल था, बट ये भी पर्सनली है. वही हाँ ये भी पर्सनली है. तो पूछ नहीं सकते खाली, लेकिन who do you think would take over ideally? Rishabh Pant, man. GG giving captaincy to Virat is joke, not anymore, man. They're more in jokes with each other. Now अब तो हो गया भाई, मैंने हो गया मसाला खत्म. Now you just they're a very good friendship, so you never I know. mean, look, But Steve Smith did it, right? Like when they came in to India, when absence Pat Cummins went for emergency because his was it his mother was not Mom, well. mother, Yeah, so it was Steve Smith who took it. So Kohli can take it. but there's no guarantee, yeah. But like, I don't know ideally, if he wants to it all depends on his communication with Rohit. If Rohit Sharma asks him, I think he'll do it. If Rohit Sharma maybe if he says himself I don't want to do, then he won't do it. It's all up to him, I think. But I would and probably Gill for captaincy is what Vinay is saying. But yeah, what about KL Rahul? Do you think he might be Bumrah is a taking good. it? No, KL Rahul. I mean, no, because KL Rahul, Bumrah, they've all been tried. Bumrah, the thing is, he's already done it. I don't know if he'll take it again. I don't know if he'll take it again and stuff. Me, I would probably go with Pant, man. I think that's my option. देखेंगे अभी जब Babar in 2019 World Cup was against New Zealand also, in that my Babar failed to change gate and finish the match fast enough for Pakistan to stand a chance to make the semi. Exactly, like that's what it is. Aggressive intent lack कर रहा हूँ at time, like most of the time, rather than They won that match, no? No, they lost it, right? No, they won that game. Maybe net run rate का कोनो कुछ बोल रहे थे. He won that game. The one he was chasing, he won the game. I remember in South Africa or New Zealand. I think both games they won. They beat both of them. They lost to West Indies. They lost to India. They lost to Australia. They beat England. They beat New Zealand, and they beat South Africa. I think. I'm not sure. So, I mean, Yeah, I that's probably why we're fighting with the Uber chicks. भाई को बोलो भाई को निकालो, आवाम यही चाहती है. या I mean, देखना पड़ेगा. बॉबी का टाइम कटते जा रहा, but I don't think I got it wrong. honestly, I don't think I don't think they will drop him, but like उतना drastic step नहीं लेते पाकिस्तान. I mean, like they have to. King है यार हमारा, king कर लेगा हमारा, king कर लेगा हमारा. Then he has to step up. Like, there's what can you do? Just Virat Kohli ko, he went through a very bad patch, but he had like runs under his belt. He had a resume, man. He had match-winning runs, not just runs. He had match-winning runs. So and at times he would make like something, right? Like at times कुछ तो भी 30. And no, वो time पे तो भाई बहुत pressure था, media भी pressure था कि कोहली को drop मारो. अभी T20 वर्ल्ड कप में आपका हर सवाल मेरे को ये था कि कोहली I think मैं कट रहा हूँ या आप कट रहे हो? अभी आ रही है आवाज? मैं ही छूँ. हाँ बोलिए. I mean होटल अकोमोडेशन, सो लाइक हम लेबर लोग फिरते रहते मैं बोल रहा था कि अभी ये मेरा हर सवाल कुछ था विराट कोहली का, राइट? लाइक लोग पूछ रहे थे विराट कोहली को, तो लाइक उसका तो कांस्टेंट है, बट उसका बैक करना लाइक बनता है, लाइक इसका लाइक नहीं है रेज्यूमे अभी यार. आई डोंट थिंक देयर इज. हाँ, वो मैच विनर का जब आपका एक स्टैम्प पड़ जाता एंड यू डन इट ओवर एंड ओवर अगेन, एंड जब कोई नहीं कर रहा देन आप परेशान होते कि कोई कहीं को नहीं कर रहा, एंड या आप मेरे करने का थोड़ा सोचेंगे. आप मेरे को 3 मैच विनिंग इनिंग बता दो विराट कोहली के, टॉप ऑफ योर हेड. 2020 फाइनल न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, वर्ल्ड कप 23 हिम एंड ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट
2023 World Cup. Recent बोल रहा हूँ मैं तीनों. Okay, and I will add to that India versus Pakistan 2022 World Cup, and then I will add that Adelaide's chase Adelaide. against Sri Lanka, that's 2025. Then I'll add the Mohali chase, which is And 2016. the Sri Lanka one, the Sri Lanka is Yeah, so I've done three, you've done three, you've added another one, four, that's seven. We've already done in what, like 30 seconds. Now tell me five match winning Babar was. नहीं है. बाबर का एक ही होगा वो वर्ल्ड कप 2019 का probably. एक दो होंगे और इधर उधर, और ही like नेवर. न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी मौका था, याद है आपको? 95 पे था, 100 बनाने के चक्कर में आउट हो गया था. फिर वो 23 का ही बोल रहा हूँ आपको. और एक तो साउथ अफ्रीका अगेंस्ट, जब पूरे साउथ अफ्रीका के बॉल जाते सब रबाडा नोकिया सब आईपीएल आ गए थे 2020 में, कोविड के टाइम पे जब मारा था, जब उन्हें याद है एक शॉट खेला था और वो इतना वायरल रील हो गया था बिकॉज ही प्लेड दैट शॉट इन इंडोर अगेंस्ट लाइक हिज नेफ्यू और समथिंग एंड देन ही डिड द सेम शॉट इन द ग्राउंड, तो इतना वायरल हो गया था वो क्लिप. उसको मैं वही तो बोल रहा हूँ, चना के झाड़ पे हम लोग ही चढ़ाते हैं और फिर नहीं, उसके बाद. मैं भी बोलूंगा, मैं भी चढ़ाया लाइक बिकॉज देखो भाई, I'll tell you, when you see someone from so close and you see the talent, like what I've seen in the nets, right? I was right behind him and I could see he has like his aura and जो भी बोलो वो तो it plays with your head, जो उसको पूरे लोग ऐसा करते हैं. And he is a good player, like he's not a bad player from any angle, but it's just he's not building his game with the with the facilities or with the constant उसको जो हर टूर्नामेंट के बारे में कुछ आउटपुट तो मिलता होगा भाई, ये गलत कर, वो उस पे वर्क नहीं कर रहा. And that's where you have to question him. Yeah. Yeah. Yeah, How his Pakistan prediction was wrong, bro. Yeah, I mean, he predicted they're going to lose, which is correct, but your prediction exactly, I think, is a day four, so wo incorrect. So I mean, I applaud your efforts. I mean, I think he had the belief part of getting Pakistan a defeat. I think that's I think at that time, even Ashwin was saying it's going to be a draw and everything. Yeah. So I mean, it's a fabulous effort, Vinay. You got it. I mean, he's played cricket more than us. Like Pranay's played cricket more than us. He knows about pitches more than us. So like obviously, like that's absolutely true. Like I cannot deny. I mean, yes, Pakistan won the match against New Zealand, chasing Babar scored a century, but if it wasn't fast enough to get an error, Pakistan needed. Yeah, that's what it is. Aggressive intent. Fish man, this guy. Yeah, you're right. Like I agree with that, Ibrahim. कोई comment सही कर रहा था शायद, but yeah, I mean, Pakistan right now they have major surgery everywhere you look. Like हर जगह भाई media रहने दो, पुराने players रहने दो, सब they don't know. Nobody knows what the right solution is to this team. From our understanding, it is wear and like tear down this, just tear this whole team apart, get new players, get fresh players, people who are a little bit more fitter, people are a bit more willing to play for the badge. जो बोलते हैं United, willing to play for the badge, willing to play for Pakistan, not looking at their own runs. Rizwan, I think if you're such a big test cricket player, you can't get out like how you got out. You just can't. Like I mean, and like for the fans also, my like I'm nobody to say anything, but my advice just would be ki take it series by series and now focus on beating the team in front of you. Stop looking at what India is doing. Stop looking at what Virat Kohli is doing. It doesn't matter. It doesn't relate to you. Okay, पहले start from scratch. आपके पास नेक्स्ट टेस्ट मैच है, वो जीतो, ये सीरीज जीतो, उसके बाद साउथ अफ्रीका जाओ, वहां पे जीतो, उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी में. आप ये मत देखो इंडिया का मैच कब है, आप देखो पहला मैच कौन सा है, दूसरा मैच कौन सा है, तीसरा है, हम फाइनल कैसा पहुंचेंगे, फाइनल कैसा जीतेंगे. ये बिकॉज इंडिया तो निकाल दी ये बात. नाउ इट्स नॉट व्हेन वी वर ग्रोइंग अप, आई अंडरस्टैंड बच्चों स्कूल में करते इंडिया पाकिस्तान का कब मैच है, जीतना है, ये वो सब ठीक है, बट इफ I think now you just have to look at how are we going to win one match at a time, because you're losing everything now. It doesn't matter what India is doing. You have to look at a series at a time. You need to focus on everything. Like even India fans, we need to forget about what this is happening, that is happening. You just look at one step at a time. How do you get to your trophy? That's what, it's simple as that. And that's what they did to an extent, I think, in the 2024 World Cup. They're learning on the 2023 World Cup. I think that's what it was. India did. बात ये, आप अगर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड को देख रहे, आप उनकी मेंटालिटी देखो. पीसीबी के लिए बोल रहा हूँ मैं. लाइक आप मेंटालिटी देखो ना कि दे डोंट, हो गया मोमेंट्स चले गए. ऑस्ट्रेलिया की अगर भूख नहीं रहती थी, दे वुड नेवर विन सो मेनी वर्ल्ड कप्स, लेट इट बी मेन और वुमेन, राइट. दे वुड बी लाइक, हाँ हमने वो करा था यार, 2003 में हमने वो करा था, 2007 में हमने वो करा था, 2015 में यार. दे मूव अहेड, दे डू एंड फॉरगेट. हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, क्या व्हाट वाज में ही रहते अपन. लाइक व्हाट वी डिड, हम कैसे थे, क्या करते थे, ये करते थे. दूसरों के अचीवमेंट्स पे वी ट्राई टू post, but that's not going to help if you need to work a new era of Pakistan cricket. You need to work on the pitches, you need to work on the team. You have to say screw that,
Look at my oppositions, England, Australia, India. इन लोगों की mentality पढ़ो, इन लोगों का structure पढ़ो, इन लोगों का operations पढ़ो, इन लोगों का sync with the captain देखो, उनका facilities देखो, जाके किसी को भेजो, scouts को भेजो domestic में, learn about your own country if that's what it takes, and that's exactly what Australia does. They find some new talent every time. They find England always keep finding new talent. England understood कि भाई उनके players अभी they're going इधर इधर, they stopped. अब national players can't go and play any tournament ऐसा वैसा. So they're learning from their own mistake. They're not saying कि हम past में 2000 so and so में हम ये जीते वो जीते. आगे देखते रहो, set forget, and that's what it is. I think they just need to take a page out of अभी जो best boards है right now, India, Australia ने. I know उतना आपको probably financial budget नहीं होगा, but there are always places that you can. अब यार वही तो मोर, आप अफगानिस्तान को ही देख लो, उनका कैसा है, लाइक वहीं तो देख भाई जिम्बाब्वे को देख लो भाई, इंडिया को चैलेंज तो करे थे 1-1 T20 में. No disrespect. They tried something. PCB have changed selected again. Azhar Ali and Alim Dar and Akhif Javed have been announced. Yeah, I saw that. And Alim Dar was the captain, like that Empire, I think, right? Like, so no disrespect. I mean, he's seen cricket, but like, yeah. It's not the team, it's the belief. Team togetherness is the most important factor for a team. Individuals can do much if they don't work together. So the thing is, like, I'm not disagreeing with you, but you don't have to like each other to win games. Right, you don't need to be together, you don't need to be lovey-dovey, this and that, everything. It's just on the field. Yes, you have to have like a plan. You got to like think. Waqar Younis, Wasim Akram hated each other, but they were the most lethal pair. You can see in Dhoni and Yuvraj, they're not the best of friends. It's clear now. They were. Yuvraj said himself, it's not it was just a cordial relationship. It was not a friendship. They used to finish matches for India. They won the World Cup for India twice. You don't need to be the best of friends. You don't need to be like thing. You just it's like on the field. You got to you backing each other. Everything is part of the game, but at the same time, it's your skill is also important. It's about understanding the game. It's about applying your brain to the match situation, being aware of the situation. That's what it has to be. I mean, the same Pakistan team was together in that T20 World Cup. They reached the finals, semi-finals, but that will happen when you're winning. Ab India ki jo team thi, jo World Cup jeeti, they're not all the best of friends, but yes, they look together and everything because they're winning. That वो तो natural रहता है. जब जीते आप साथ में रहते, जब हारते tendency ये. अब me and Fez, we're not the best of friends, but if we play a paddle game against somebody, we can win. Like it's not like we can't win, right? Like we will, like it's not like thing. Me and him, we have different beliefs. Your beliefs are different to mine, but that doesn't mean that we can't win. Of course, we can. So you have to form an understanding. That's what it is. Yeah. Me and Vinay badminton, bro. I know. I can tell you now. Me and Vinay in badminton, we can beat teams. We can beat people. And me and Vinay have different beliefs, different thing. We're not the best of friends. You don't have to have like the crazy thing. Like it can happen. Like it's not something. Like you have to respect each other's perspective as teammates. You got to respect understanding. Like ये मत सोचो कि आपको ही हर चीज आता. I think I also have to understand कि भाई ये वो बंदा है ना, ये भी कुछ जिंदगी में उखाड़ के आया है यहाँ पे. एग्जैक्टली. और आपको सिचुएशन देखना है. देखो वसीम अकरम, वकार यूनिस तो एक दूसरे को तो लाइक गले पड़ गए थे एक टाइम पे, बट वही था जब ग्राउंड पे उतरते थे, देयर थिंग वाज लाइक विकेट निकालना है. सो दैट्स द थिंग, लाइक इट जस्ट डिपेंड्स ऑन हाउ यू एंड you can't always bring reels in this and say आमिर आसिफ, वो आपका जो भी था चले गया. लाइक वो चलो, that was probably an era that could have been something like next level Pakistan, but नहीं हुआ. अब आपके पास क्या है? लाइक अब आपके हाथ में बाबर है, बाबर को प्रोटेक्ट करो. मैं ये नहीं बोल रहा बाबर फेंक दो, बाबर को लेके सिखाओ. बाबर हैज टू अंडरस्टैंड द टफ टाइम्स एज वेल. ड्रॉप हिम, शो हिम दैट यू केयर बाय ड्रॉपिंग हिम. डोंट प्ले हिम एंड से कि हम तुम्हारे सपोर्ट करें. टफ लव भी एक चीज होती है लाइक दुनिया में. लाइक थोड़े लोगों को समझ में स्टिक से आता समझ में कि भाई ये नहीं करना है. अब रिजवान को मत चढ़ाओ. एक श्रीलंका के अगेंस्ट जिता दिया, एक मैच बांग्ला. अरे यार ठीक है, PSL is not competitive to be frank. One side भी मार सकते हैं आप. शाहीन won it twice, but शाहीन जब कैप्टन बना हो पाकिस्तान का क्या होता है? You need to first understand the players, understand the connection, build relationship. आप आर्मी कैंप जा रहे हैं या अपना मजाक बना रहे हैं. और नेचुरली क्या होता है मालूम कि टुगेदरनेस ये वो सब कब डिफीट होता है जब आप हारना शुरू करें. यही शाहीन, यही शादाब, यही बाबर एक दूसरे की इतने तारीफ कर देते हैं इंटरव्यू में. भाई उसको पूछे थे, मेरे को 2 इंटरव्यू याद है. एक बाबर को पूछे थे कि who would give the last over to बुमराह शाहीन, he said शाहीन, राइट. दूसरी चीज नसीम, सॉरी, लाइक ओके. एंड देन देयर वाज वन इंटरव्यू, शाहीन और आमिर का इंटरव्यू शोएब मालिक ले रहा था इन द ILT20. उसमें उसको पूछे कोहली या बाबर आजम का कवर ड्राइव और समथिंग लाइक दैट. इन्हें आमिर तो कोहली बोला, इन्हें बोला कि बाबर.
इन्हें बोला बाबर तो तो आमिर क्या बोलता है, छूट तो मत बोल भाई। या एग्जैक्टली या वही इंटरव्यू आप सही पकड़े। तो वो वाला जो है तो एक दूसरे की तारीफ कर रहे थे, ये सब चल रहा था। एक मगर जब हारना शुरू करे ये, अब विराट कोहली रोहित शर्मा लोग बोल रहे थे कि ये उन लोग का हुआ, अगर लड़ाई हुई क्यों हुई, बिकॉज सेमीफाइनल हारे होंगे, दैट्स द ओनली थिंग आई कैन थिंक ऑफ, राइट? तो लाइक जब हारते हैं ये सब चीजें होते, बट देन you have to be like, it's part of the game. Look, you're paid also, भाई you're a professional, you have to play, you have to, these things you can't like let it like not allow you to perform for your country. इमोशंस तो निकलेंगे भाई। जब विकेट ही जाती है ऑस्ट्रेलिया का, आप देखें मुस्तफा शो, आपको तो बेटर मालूम, बैट आम फेंक देते हैं, हेलमेट आम मार देते हैं, क्या क्या Yeah. कर देते, राइट? दे गो मेंटल, बट दे फॉरगेट इमीडिएटली द नेक्स्ट गेम, they're back. प्रायोरिटी ऑस्ट्रेलिया, प्रायोरिटी कंट्री, दैट्स द थिंग, राइट? दे डोंट केयर, दुनिया में कहीं भी आप फिरो, प्रायोरिटी जब ऑस्ट्रेलिया आपको बुला रही है, भाग के आना, दैट्स द थिंग। मगर वो ये कल्चर की बात है। अब देखो मेरे को अगर आप बोलेंगे फैज मी एंड यू आर गोइंग टू प्ले फॉर ऑस्ट्रेलियन क्लब, राइट? It will be difficult for us to adjust because they will straight at us, they will say अपन थोड़े इमोशन ना, but I'm saying that's Australian, अपने कल्चर के हिसाब से carve out your thing. I'm not saying कि become Australia, I'm saying India, अब इंडिया जिस तरीके से, मैं ये बोल रहा हूँ, the new Ajit Agarkar era and then the Dravid and then this one, look how beautifully India has changed, like mentality wise. आप देखो, they don't care about what media now. Rohit Sharma has made this thing where he's sitting like कौन था ये, ध्रुव जुरेल का एक इंटरव्यू था कल या परसों का, he said बॉस इतना बेहतरीन है रोहित भाई डजंट गो इनटू ये गॉसिप, वो चार बंदे अपने जायसवाल, सरफराज, इन लोग के साथ बैठते, he talks about their future, so that's what the captain cares about, their future. The captain is, so आप उसका पर्सपेक्टिव लेते, आप उसके अंदर, आप उसके बारे में समझते कि भाई इसकी खोपड़ी ऐसी चलती, then only you will understand, like you when you make a team, you know कि हाँ इसकी खोपड़ी ऐसी है, इसको ये टाइम पे बॉल देना, अभी मेरे को एग्रेसिव चाहिए, मेरे को डिफेंसिव चाहिए. So that's what it is. That's the beauty of Rohit Sharma's captaincy, that his players are like his kids, like he understands them so well, and they have his back and they want to play for him. Now, Musti, I agree to disagree. If the dressing room is not the working, the team won't work on the field as well. The Not thing necessarily. is, but I mean, in this case, like that is completely fair. But in this case, what has happened is the team wasn't working on the field. That's why the dressing room stopped working, because the same people were on board together. Like अगर आप देख लो इंडिया को जब हराए थे शादाब, उन लोग सब इकट्ठे थे, बाबर, they were all like बाबर Bobsy is the king, ये वो सब like सब इकट्ठे थे. Why? Because they were winning. Now when it started losing, slowly the media started getting involved, this that everything, and then उन लोग वो डालना शुरू करे, राइट? चिंगारियां इधर उधर, शाहीन वर्सेस बाबर, सो ये वो, तो so it's also the other way around. That's all I'm saying. I'm not saying you're wrong. It's not like that is a fair enough opinion that you have, but I'm just saying it's also the opposite, that when the team is not working on the field, then the dressing room also doesn't work. If the team is working on the field, the dressing room, it's both ways. Like it's like not the, you but there can't can just also be a world, I think, I'm sorry to chime in, but I think there can also be a world where, let's say you don't like each other, but the collective goal is to get glory to your team. I think you can still win. Yeah, but that I agree with that, but that's what I'm saying. It's all depending what's happening on the field. Now, if me and you are Exactly. playing, Yes. right? If we are winning and we don't like each other, we'll still keep going. But if we're losing, we're going to fight sometimes. Exactly. We're going Yeah, to, you it's get going it. to That happen. will give you an added reason to like Yeah, raise that's the what thing. it's Yeah. like. अब ये फिक्शनल स्टोरीज में बताते हैं, like चक दे इंडिया में ये वो की like सबको इकट्ठे करना है, you have to, उन्हें दोनों को लेके आता स्ट्राइक और उसको वो सब like doesn't happen. It doesn't necessarily. दावत चल रही है वहाँ हॉकी पिच पे, बोल रहे too much है वो तो. But yeah, I think वही है कि that's the thing, like you just have to sometimes move your egos aside and do what's right, and that's to play for your team, like whoever you are. But yes, Vinay, also what he's saying is equally important. Togetherness जरूरी है, but you don't have to be a family, right? You don't have to be a family. उन लोग यही तो दिखाते थे, हम फैमिली है, एक यूनिट है, हम पाकिस्तान है, हम साथ में, नवाज तू मेरा मैच विनर, ये तो दिखाते थे. नवाली छराया था वो 2022 वर्ल्ड कप का जो रिफीट था, उसके बाद से तो निकले ही नहीं वो लोग अभी तक. हारिस रफ अभी तक फुटा हुआ है उसका. मगर वो टाइम पे याद है उन्हें उसको ऐसा पॉइंट आउट करके बोला था, लाइक सो लाइक उन लोग सब साथ में थे, इकट्ठे थे एंड एवरीथिंग. सो लाइक आप move on करना है सबसे पहले. That's the only thing I can move on from those moments. Like Haris Ruff, after Virat, he went 7 levels low and he got hit to a US bowler. And the field placement was so bura. Like you were there, like you saw it. Man, आपका mid on ऊपर चढ़ा हुआ है. Come on, final ball of the day.
ideally everybody has to be on the team. So And you then, have to understand and straight up, that. look, Ashwin, when he got dropped in the WTC final, he played that one, he didn't perform. He got dropped in the next final. You think he was Yeah, happy sitting in that? He yeah, was not yeah, happy. He's no, probably pissed at Rohit Sharma. Like, yeah. I don't have any confirmation of this, but I'm just telling you, there's no way As a someone. psychology, Yeah, psychology, just I mean, now Ashwin is out there. He's doing YouTube videos now. He's doing Hindi videos. Fez with Vimal sir also, he's doing Hindi videos. If you see that channel, तो वहाँ पे हमारा कृपांश का फेवरेट. या तो वहाँ पे जो है हिंदी भी वीडियोस करे. So we now looking at Ashwin and understanding him, I know for a fact that he wouldn't have been happy when he goes. So like, but that doesn't No, mean he's going happy to. when you're not like getting chance on anyone. Like Kuldeep Bhai, the prime example. He went out of the team. He came back into the team. Right. He fought for his thing, and then that's good for him because at that time, if he would have been, he said, I had an ego. I thought मेरे को सब आता है. In that interview with Ashwin, he said, मेरे को सब लगता था क्या. But when I got dropped and then I went to the coaching and I understood कि भाई मेरी game off है. मेरे को leg spin ऐसा कर. I went to people. So go to people and understand तुम क्या कर सकते हैं better. Don't be egoistic. skill कैसे improve करना ये तो करते नहीं. Like मैं अगर मैं बोलूँगा मुझे मेरे को सब आता है. Like I used to be like that probably back in the day. But now learning and understanding from my peers, understanding from Same people with me. coming. Like I mean, like 10 years ago, I would think I'm like whatever the big shot, but like it's not like that. You get humble. Life will humble you. Yeah, life will humble you. 100%. Do you think Herrera and Kamran Ghulam should now deserve it? They do deserve it. Will they give it? If Herrera took that, I think he deserved it. क्या effort था वो? उन्हें boundary के बाहर जाके उछला, but he slipped a bit. So I think वो बेचारा catch. Surya Kumar style. Yeah. Pakistan should bring back Fawad Alam. फवाद आलम कहाँ चले गए? वाओ, फर्स्ट मैं बात कर रहा था और यही वीडियो देखो निकला. हाँ हाँ, अब मत बताओ, वो हो जाएगा. अभी एक निकला, अब फिर एक आ जाएगा. हाँ मैं समझ गया. You. So that's what it is. I mean, Pakistan is a continuous working problem. I don't know when it's going to be a progressive, but right now it doesn't look like it's in the best of shapes. Call it whatever you want. They have to learn. They have to guard down their ego, and they can't live on moments, past glories. They can't keep, like Mustafa said, ranking themselves with India. They're nowhere close to India. I mean, it's not a biasness. It's pure. If you pick up the stats, India has done much better everywhere right now. Let it be Australia, let it be World Cups, let it be anything. Final result. I'm not saying 1 or 2. I'm saying final result. India had a T20 World Cup now. They've got 2. They've got a World Cup 50 over. They've got like so many things. So that's what it is. Like you just got to understand where you're going wrong. Separate your teams. T20 अलग करो. Domestic cricketers को involve करो. आप एक system बनाओ. जैसे हम इंडिया में रांची को हम लोग प्रमोट करें. Whatever reason it is, आप कुछ भी बोल दो. But it is happening now. आज रांची शुरू भी हो गई by the way. So the season has started. So वैसा एक season आप strictly follow करो. Send a scout there. ये तो सिर्फ हम लोग घर पे बैठ के आपको बोल सकते हैं. Like this is आप लोग क्या ही लेवल पे और आप उसकी स्क्रूटिनी कर सकते और आप बेटर प्रोसेस. हम तो घर में बैठे बैठे जो हमारे दिमाग में आ रहा है हम वो बोल रहे हैं. एंड आप सोचो okay, you have all these data analysts and stuff and you're still not able to do it. So that's like something that you just can't feed. वो बोलते हैं ना चमचे से नहीं खिला सकते आप. Yeah, बिल्कुल 100%. And like you can't be satisfied with mediocrity. You have to look to ways to improve. Right now it's not looking like the players are improving on the skill. आप जैसा शाहीन के बारे में बात करें, उसकी पेस इंप्रूव नहीं हो रही ना, उसकी लाइन लेंथ इंप्रूव हो रही ना, स्विंग हो रहा उसका बॉल. बाबर की टेक्निक फ्लॉड चल रही है, उसकी स्ट्रोक मेकिंग इंप्रूव नहीं हो रही. द वे ही इज डिफेंडिंग इंप्रूव नहीं हो रहा. नसीम like एक time पे the most popular guy in terms of cricketers, good looking cricketers and extremely fast bowler. ये वो बेचारे का शोल्डर तोड़ दिया डाल के. क्या ही करेंगे उन्हें भी, मगर like improve नहीं हो रहा. Like he also has to, all of them I think, not just, I'm not trying to pick on one player, everybody, every single player including the captain who scored a 150 should not be satisfied with this performance. They should be looking at themselves and like they after have 4 years if you're scoring 100, that's the question, right? Like that's what you have to understand, that where is your cricket going. Is Tuchel coming? I mean, no conversation has been made between Tuchel and United, so that's not it's coming. James, coming, gear up. I think they're gonna go tank engine, but almost the tank engine. biryani. On the biryani. Coming home, baby. Yeah, baby. But, yeah, I mean, right now this is the sad state of Pakistan cricketing affairs. I mean, same as Manchester United. Same like as Manchester no United. difference. Manchester United में तो छोड़ दो भाई, कम से कम एक FA Cup और एक कार्बराव तो है कुछ मुंह छुपाने के लिए. यहाँ तो कुछ भी नहीं है. And
but yeah, like Mustafa said, it's a very bad time for यहाँ पे है यार वो चैंपियंस कप. वो भी लोकली है भाई. क्रिकेटिंग तो क्रिकेटिंग ये भी लो लोकली एफए कप कौन सा फिर भी इंटरनेशनल. बाहर के टीमों से like, क्योंकि वो जो बाहर के प्लेयर तो है. Hey, bro, man, you cannot tell me you're happy with what is happening with Manchester नहीं 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 United. नहीं. It's अरे a भाई shit show वो right now. उसके लिए तो अभी 24 घंटे भी बस नहीं उसके It's, औंठने के लिए. it is वो तो एक अलग ही absolutely प्रॉब्लम है crap वो which is भाई. going on right now, buddy. We're getting ऐसा laughed at, man. It's like a circus going on, man. Every weekend I go in and we come out with a loss, bro. We get slapped every weekend. उसके ऊपर बैगन एफपीएल टीम भी नहीं पॉइंट डाला रही. क्या बोलेंगे जिंदगी खराब. But yeah, I mean, sad time to be a Pakistani cricket fan, but hopefully they can come up with something. Sad time to be a Manchester United fan. उसका तो कुछ बोल नहीं सकते. But yes, India versus Bangladesh tomorrow, the T20, third Is T20 it? in Hyderabad. Oh, Is it क्या? it's an Hyderabad अभी derby, टिकट खरीदा बोल रहे हैं मेरे yeah. को. Oh. But yeah, Anyone that's who gonna. wants fans to go for the game, please put a hand up in the comments because he might need some motivation. He's not motivated right now to go to the game. I'm more motivated to go to Bangalore and FTM पे एक भी प्लेयर का ना लो जीत जाओगे. एक भी प्लेयर को ना लो तो जीत जाओगे. यूनाइटेड के बोल रहे हैं, I think. But yeah, I mean, यूनाइटेड के प्लेयर हैं भी नहीं तो नहीं चल रहे. है सब प्लेयर बेचारे, वो भी बेचारे 2 month के लिए आउट हो जा रहे. Like I don't know, बेचारा Mazraoui just got some surgery done. Hopefully he comes back fit. Yeah, it's just, There's no excuse, bro. We spent so much money in the summer. इतने सब प्लेयरों को खरीदे ये वो 14th place. That is bullshit, man. I have no excuse for this if team. things go like this, I'm predicting we'll be like 2018th by like November end probably. Like that's how it is. Like there's no football, and we're being stringent to a system that can be played with this team. You can't play football, fast passing from the back and stuff with like Maguire and stuff. I'm sorry. But that's what it is. And if again, like I said, हम घर पे बैठ के अगर हम लोग घर पे ये बैठ के देख सकते हैं, घर पे बैठे बैठे ज्यादा डेटा वेटा नहीं रख के और या डेटा में घुस के नहीं ब्लाइंड आई को देख सकते, तो लाइक आई डोंट नो आगे के लोग क्या कर रहे हैं. बट या आई मीन इंटेंट अगेन, प्लेयर इंटेंट, ऑल ऑफ दिस थिंग्स आल्सो मैटर. आई एम नॉट सेइंग like they also equally to blame, but yeah, there's surgery required everywhere right now. And that's the root of it. Pakistan, yeah, Australia. I mean, the main guy, the manager has to go because the thing is, he got all these players. पूरा team बदल दिया उन्हें, change हो गया पूरे. आप you got players like Delict, Casemiro, what's this guy, bro? Like Ugarte, Martinez, Euro who's injured, Onana supposed to play out of the back, Zerski, Hoyland, ये पूरे इसके प्लेयर हैं. और देखो ओले के अंडर भी ये अलग टीम थी, ये अलग टीम है. तो लाइक आपके प्लेयरों को लेकर के फिर भी नहीं हो रहा, तो लाइक आई डोंट नो मैन, देयर इज नो, इट्स देखो इंजरीज आई कैन से ठीक है, दैट्स अनफॉर्चुनेट फॉर यू यूरो एंड जो भी आपके प्लेयर्स इंजर्ड, बट मार्टिनेज एंड कास्मिरो हैव बीन हियर फॉर इनफ टाइम. जो फिट है उसको बेंच कर दिया उन्हें एस्टन विला के अगेंस्ट और लिंडलॉफ, और उसको स्टार्ट करा. दैट्स स्टूपिड ब्रो. लाइक कम ऑन, लाइक आप वही है ना, रैशफोर्ड अच्छा गेम जो खेल रहा है उसको फुल खिला रहे, जो बुरा गेम खेल रहा है उसको फुल खिला रहे. लाइक अब कुछ नहीं करा वो. अब आप बोल सकते हैं एजेंट का क्लॉज है. दैट्स जस्ट अगेन एन it's the same thing like Pakistan bro right now. That's what, like, for all our fans who all the fans who are Pakistan cricket fans and United, we really like understand where you're coming from. Yeah, it's the same. We can only pray for you guys. Like, that's what it is. Yeah. There is a women's match starting, right? Like in an hour. Yeah, right? In an hour exactly. Pakistan cricket versus Australia women's, and if Australia win this, they go on to the semi-finals. Another semi-final under their hat. West Indies beats Bangladesh yesterday with a good margin. Incredible batting from Stephanie and I think Hayley Matthews also to give them a good start. And yeah, they also are now in good contention. I think the top of the table of Group B, followed by South Africa. So yeah, I mean, West Indies, South Africa look like the two teams there. I mean, England are also there in contention still. So we'll have to wait till the end of the round robin to see what happens in that table. But it's interesting. Top three teams are four. The net run rates like almost neck and neck. Adhyanan Singhal Bhai saying, I saw a pic of Naseem standing with Anderson, and to be honest, they seem completely opposite of their age. I mean, he's basically saying Anderson maintained himself, bro. That's peak cricketer that you're comparing with. Like Anderson looks much more fitter, and he's been everywhere, and he knew what time to leave, what format, at what age and stuff, and he's just fantastic, man. Anderson तो भाई कोई level ही नहीं है. Like बोलते ना नाखून का बराबर भी नहीं है. So it's like अभी तो Naseem, see, I like Naseem as a bowler. I really enjoy him.
but he has to learn. Like that's what it is. He has to pick up learnings from Anderson. Like fair enough, even if he's standing with Anderson, it's his like he deserves to because he probably will. Like, This exactly, is but right. that shouldn't be the case. That shouldn't be the case. I mean, yeah, that shouldn't be the case. But look at what temperature they're playing in, bro. Like he's playing in 40 peak with bowling like 30 plus 40 overs, 50 overs in a day. Like Anderson played in windy condition, overcast condition. Not that he didn't come to India, Pakistan, but yeah, look at the amount of stress that is there in Pakistan, emotionally, mentally. Media तब दम नहीं करती आपको. आप Anderson है, आप you're Jimmy. You're not time great. Now mostly where is Deandra? She's Deandra there, Dawkins. bro. Yesterday, 19 of 7, 271 strike rate. What do you mean? She's there. Not out गई उन्हें 270 के strike rate पे भाई देख क्या रहे. दिल पे क्या दिल पे ले लिया तुम डियांड्रा को. I mean उन्हें मार रहा दिल पे तो of course दिल पे लूंगा. 19 of 7. Deandra Dawson is there. 19 of 7, bro. Yeah, she's there. 271. Vinay, she's there. Vinay, open your eyes and see. She's there. कुछ भी मत बोलो. टॉप 5 में लिया मुस्तफा को रीजन से लेता उन्हें. भाई उन्हें सेवन बॉल में 19 मारी. सही नहीं है स्कोर. सही है भैया, बराबर है. 271 की स्ट्राइक रेट और क्या होना तुम्हारे को T20 में. क्या होना? Right on the dot. On the dot. Like that's it, on the dot. On the dot. Well, even I put Nat Skipper Brunt in my top 5. She's also doing well. Yeah, man. They don't appreciate the good things. They appreciate look at the bad things, bro. Like, this is why Mustafa said, like, आप लोग close नहीं है, but team में जीत सकते साथ together. Your pick also, Haley Matthews did well, 34 of 22. Today. The best strike was 154. Yeah. So who won? My God, strike rate 270, bro. Yeah, 270. But yeah, I mean, right now, like signing off now with Pakistan. Where is signing off? Give me 2 more minutes. I want to ask you a couple of questions. Just 2 more minutes before we go. One question is that from India's point of view, T20 going tomorrow, you're happy with the biggest positive for me is the all-rounders. I think Hardik Pandya, Nitesh Kumar Reddy, the way they're playing fast bowling all-rounders, like, I mean, hopefully all formats, but how big of a positive is that for you? And do you like to see any changes tomorrow? I mean, I'm very happy with like all-rounders coming in. It's like you've been saying this to me for the longest, and I appreciate that because I never used to vision this because hota nahi tha, but now that you see their impact in the game, Nitish Reddy and Hardik Pandya's fitness is like the biggest thing for me. I think more than anything, he's finally catching and running, and there doesn't look. I'm not scared that I didn't टूट जाएगा. Like थोड़ा बहुत fitter हो गया, no matter what. So I am happy with the way he's been come back, and he's come back strong with all whatever that's happened with him, irrespective of who's right and who's wrong. And again, at least Reddy, man, this guy, we saw him like in Sunrisers, he's incredible. And good to see Indian cricket picking up, early peakers, right? And when they're peaking early, like you take them in a maybe you could call that wrong. Maybe you say, okay, by system ke player, that's another argument. But for me, as a biasness towards Hyderabad, Nitish Reddy looks like he has the mentality. He looks like he's ready and roaring to go. And changes while I mean, देखो, I always say that जब tournament हो जाता, you can give players an opportunity like जो नहीं खेल पाए या जो नहीं है like उनको regular chance नहीं मिलता, just to give them a little bit of boost, right? So I guess yeah, they can make a couple of changes just to like see who fits the bill, who still requires time to settle in this team, stuff like that. Sanju has to score, man. उसका तो दिमाग हो जा रहा था. Yeah, hopefully he gets some runs. Sean and the PC said today that they expected the pitch to spin at the end of day 2. Whereas Jason said the pitch turned out to be exactly what they expected. Poor reading of the pitch, poor preparation, poor analysis, poor everything, man. Like, like I think it is. It was poor all round, man. If the captain is saying that that's not acceptable, you should not be expecting it to turn by day 2. Like, how can you expect that when it's not going to look like so flat? Expected the pitch. It's a poor excuse. I think. But you can't like again. You can't bring a curator just he's from Australia. That guy can't change your natural conditions. Like you did this in Bangladesh as well, where we saw कि भाई आप मैं आके मुस्तफा सऊदी में बोलूंगा मैं इंडिया का रैंकर नहीं बना सकता, उसके कंडीशंस अलग होंगे. Like आप just because some guy from Australia and he's making the pitch, that doesn't mean I'll become Australia. You will get bounced and stuff like that. So you've got to first understand that they've got to get like a like a farmer or something to just make them understand कि भाई pitch की soil का texture क्या है, soil कैसा behave करेगा, क्या होगा, तो आपको एक समझ में आएगा कि भाई मैं जब. And my follow-up question would have been, if that is the case, then why did you go with one front line spinner? If you thought exactly, right? Exactly. That's like, yeah, they say Salman Aga hai, Abrar hai,
they'll start making up. No, but my question is frontline spinner, right? Not part-time spinner. Salman is a part-time spinner. Noman को क्यों नहीं खिलाए, right? Like that's my I think question. Noman injured हो गया था. I think Yeah, Noman like injured हो गया था just before. अच्छा इंजर हो गया अब तो फ्रंट लाइन में वही है मेरा लाइक फ्रंट लाइन स्पिनर क्यों नहीं खिलाया आप लाइक वही है अब इंग्लैंड जो है टेल मी जो रूट एंड सलमान नागा डोंट यू पुट देम इन द सेम कैटेगरी एज अ स्पिनर Yeah, 100%. Yeah, so then like they had Shoaib Bashir and they had Leach. If you thought then like Tony Hemming is from Australia as he was the creator of Abu Dhabi. By the way, Adhian Adhian Single Bhai, I'm sorry if I pronounced you wrong, but please make sure you like and subscribe. Thank you so much for joining. I really like your input, man, and in the comments it really helps. And thank you so much. On that, he said both teams played similar lineups with 2 spinner and 3 seamers, so he's considering Samak. That's what it is. Salman ko फिर चढ़ा दिए को like they're just making him something else that he's not, and bro, it just makes no sense. Like even if you thought it would break up, like Mustafa said, you would ideally put up another spinner over there rather than like a fast bowler, right? So day 2 पे अगर spin हो रहा, you don't want Naseem and Shaheen to come and bowl leg spin. And based on that, I don't think Babar Azam or anyone will bowl spin. Even South Shakil, I don't know if he's a part timer or not, but yeah, it just doesn't add up. And you have to understand your condition, you have to understand your player's mentality, your everything, man. It's just like you don't know. It's like strangers playing with each other, strangers managing strangers and stuff like that. I've been at Survivor 7, but wasn't active. Thank you so much. You can come anytime you wish. And yeah, we definitely appreciate if you're active because it's always fun to get comments. Mithun Bhai is in the house. He said, भाई हमें इंग्लिश नहीं आता, कुछ हिंदी में बता सकते हो? भाई हम हिंदी अभी पढ़े तो आप हमारे को बोला हम हिंदी में क्या बता सकते हैं? बस हिंदी बोल सकते हैं, बस बात कर सकता है हिंदी हिंदी भी बात कर सकते हैं, उर्दू भी बात कर सकते हैं. आप बोलिए आप कहाँ से हैं? सबसे पहले वेलकम टू द चैनल. होप आप सब्सक्राइब एंड लाइक करें. एंड या आई मीन आपको क्या लगता है पाकिस्तान के मैच के बारे में? कैसा इनको सुधार सकते हैं या क्या ही जड़ी बूटी खा सकते हैं जिससे इनकी जो क्रिकेट है निकल के आए? अभी तो हमें समझ में नहीं आ रहा, पाकिस्तान को नहीं समझ में आ रहा. तो या ABC 123 एवरेज स्पीड ऑफ पाक पेसर. एग्जैक्टली मैन. मुस्तफा ये बोलो भाई, क्या है कि या तो प्रोटीन नहीं ले रहे या जिम नहीं जा रहे. 138, 139, 136. I thought he was bowling 140 plus. भाई गर्मी में फुस हो गया ने बेचारा. लाइक उसके आप कर्ल्स भी देखो पूरे ड्राई हो गए थे. लाइक जो ने ये मसला है भाई. ये अब रीजनिंग क्या है उसका? इंजरी है, ये है, वो है, एफर्ट नहीं लगा रहे, मेरे को नहीं मालूम. मगर 135 ये पिच पे तो नहीं चलेगा. और यही तो है पाकिस्तान. आप क्रिकेट देखते थे पाकिस्तान को और आप सपोर्ट करते थे या आप बैक करते थे बिकॉज उनके पास पेसर्स थे जेन्युइन और वहां पे आपको ट्रॉफीज या मैचेस जितवाते थे पेस बॉलिंग. और शाहीन खुद मैचेस जिताता था उसके पेस के साथ. वो जो जब उन्हें टॉप पे था अपने करियर पे, जो भी 1-2 महीने या 1 साल ले लो आप, उसका जो पेस है उस 140 145. नाउ इफ यू सी इफ इज बॉलिंग 127 126, दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल. इज इट बिकॉज उसका जो इंजरी हुआ 2022 में उसके वजह से या लाइक जेन्युइनली उसका फॉर्म गिर गया, जेन्युइनली ही इज रन टू द ग्राउंड? मेरे को नहीं मालूम. आई डोंट नो व्हाट द एग्जैक्ट इश्यूज. या बिल्कुल. एंड देखो भाई, जब आपका एक आमिर जमाल बॉलर इंजरी से वापस आ रहा है एंड ही इज एबल टू परफॉर्म 135 165 डाल रहा, कहाँ से ही समझ में आएगा कि भाई शाहीन एलीट बॉलर है. भाई लोग बोले शाहीन आफरीदी जवानी इतनी जल्दी तो नहीं ढलती भाई. लाइक 2-3 साल में 4 साल ही हुए. 2019 तो नहीं क्या 23-24 का है, स्टिल अ लॉन्ग टाइम टू गो ब्रो. या उसको जिम भेजो, उसको डाइट अच्छा दो. आई डोंट नो व्हाट प्रॉब्लम जो है उसकी, लेकिन यही चीजें हो सकती है कि आप मसल बिल्ड करो जो भी आपका लैकिंग हो रहा है. लाइक एंड दैट्स व्हाई हार्दिक पांड्या को भी अब देखो अच्छा डाल रहा था. 130 में 132 में आ जाता हार्दिक पांड्या अगर थोड़ा फिट आ जाएगा. 140 तक आ जाएगा बोलेगा. आई थिंक if he just puts it. Even funnier is that they lost and they appointed recently. हाँ अलीमदार के आई डोंट नो वो पक्का हो गया. अगर पक्का हो गया तो समझ में नहीं अंपायर कैसा बन गया अब सिलेक्टर, मेरे को अभी तक समझ में नहीं आ रहा. दैट्स वियर्ड ब्रो. I mean he was a cricketer as well. I mean उनके first class probably खेले होंगे I guess, but yeah umpire तो all in out है, so he might be knowing. I don't know, maybe he's a good cricketing brain. We can't judge without knowing, but yeah that's ideally what I think. मिथुन भाई बोल रहे पाकिस्तान टीम में अब सारे न्यू प्लेयर होना चाहिए वैसे ही क्योंकि वैसे भी तो हारते जाना है. वैसे मुस्तफा भाई आपकी जो था एनालिसिस सेम मिथुन भाई भी बोल रहे कि भाई यंग प्लेयर्स को लाओ. हारे तो कैसे भी हार रहे हो आप, लेट इट बी बाबर इज वन, लेट इट बी न्यू प्लेयर्स. आप न्यू प्लेयर्स को लेके आओ.
ताकि आप हारेंगे आप तो ऐसा बैक भी कर हारेंगे। चुके हैं, राइट? अगर आप 1 2 3 4 साल बैक कर चुके हैं, अभी रिजल्ट नहीं आ रहे, और पिछले 1 साल लगातार आप यूएसए के बाद आप बैक करें उन लोगों को, अफगानिस्तान के बाद बैक करें, बांग्लादेश के बाद बैक करें, अब इंग्लैंड के बाद भी बैक कर रहे हैं, तो फिर एक आपको क्या बोलते हैं, सीमा जो है, लाइक एक लाइन बाउंड्री लाइन। या एक लाइन आपको ड्रॉ करना पड़ता है, उतारना पड़ता है, और बोलता है भाई इनफ इज इनफ. So that's what you have to do. You both stay in Hyderabad. First is in Hyderabad. I'm currently in Dubai. So yeah, I mean, but हाँ, yes, दोनों हैदराबाद में ही रहते हैं, लाइक आई लिव मोस्टली इन हैदराबाद, so I come and goes to I live Hyderabad. outside of Hyderabad from uh, east of Hyderabad. Yeah, hope. I personally think that Mayor Hamza has been their best teamer. Yes, this is true. Since the Australia series, I think he's completely. He was very good. And again, he has a. उसको एक सीखने की भी चाहत है मीर हमजा को. I think he keeps adapting to the conditions that are coming. He prepares himself at least. Australia में he did quite well in the absence of certain bowlers, I think. And don't know the reason behind it. Again, Wasim Junior was also good. World Cup में अच्छा कर रहा था बेचारा, उसको भी निकाल दिया आप. और अब्बास कहाँ चले गए यार? रोहित मोहम्मद अब्बास को उसको तो हमेशा ढूंढते, हमेशा भाई, उसको ढूंढते. उन्हें लास्ट जब जीते थे मैच, आई थिंक उन्हें था ओपनिंग बॉलर. उन्हें यूएई में भी अच्छा अंदर लेके आता था बॉल, बाहर लेके आता था. साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी जब सीरीज हुई थी पाकिस्तान में, उन्हें अच्छा डाल रहा था. उसको कहाँ गायब कर दिया मेरे को अभी तक समझ में नहीं आ रहा. ही वाज देयर ओनली गुड लाइक टेस्ट बॉलर मैन, कंसिस्टेंट. आई डोंट नो वेयर ही इज गॉन. या वैसे तो बोले बहुत प्लेयर थे, आपको याद है एक थोड़ा टाइम पहले वी डिड अ पॉडकास्ट विद समवन एंड ही टुक समवन नेम दैट वी बोथ डिडंट नो, वो पाकिस्तान टीम का. तो हमें थोड़े थोड़े ऐसे प्लेयर जो एक मैच के लिए आके गायब भी हो गए, सो हम इतना शॉक भी नहीं होना चाहिए कि अब्बास भी चले गया इन अमंगस्ट दोस प्लेयर्स. आपको याद है धानी आया? ये भी सवाल यही है कि राइट, लेकिन शाहीन नसीम, ये वो इन लोग के पास टैलेंट है जो हम देख चुके हैं, जो विकेट्स उन लोग निकाले, इन लोग क्यों नहीं कर पा रहे, ये भी तो सवाल है, राइट? तो ये अब जो भी प्लेयर है अभी करंट, उन लोग क्यों नहीं कर पा रहे वो लेवल पे जो पहले करते थे, या व्हाई आर दे बीइंग एबल टू इंप्रूव? दैट इज आल्सो अ क्वेश्चन. व्हाई दे नॉट बीइंग एबल टू टेक इट टू अनदर लेवल? रन डाउन ब्रो, लाइक सिराज जो है, सिराज के भी लोज आते, एक टाइम पे लोग बोल रहे थे भाई निकाल दो उसको, ब्रेक दे दो, मगर उन्हें इंप्रूव करके वापस आता. सेम थिंग बुमराह इंप्रूव करके वापस आता, राइट? लाइक यही बुमराह, शमी, सिराज को आप स्पेशली बुमराह एंड शमी इतना गालियां दिए थे जब 150 फॉर 0 हुआ था यहाँ पे दुबई में, और वही आपको जाके फिर लाइक 50 ओवर वर्ल्ड कप में शमी तो क्रेजी कर दिया, पर T20 में बुमराह क्रेजी कर दिया, जिता दिया आपको. तो लाइक what happened? He improved his game. He went back to the drawing board. Shami went back to the drawing board. They improved their game. So you will have सिराज को lows. तो अभी आपको याद है आईपीएल में भी आरसीबी, आई थिंक ईद का दिन था जो मारे थे उसको, एंड देन उसको ड्रॉप कर दिए थे एक दिन, फिर वापस आया. सो दैट्स व्हाट, कभी-कभी आपको लोग समझते हैं कि ड्रॉप अगर हो गया वो बहुत बुरी चीज होती है. इंडिया पाकिस्तान में लाइक इट्स कंसीडर रॉयल ड्रॉप हो गया यार, उसकी तो खत्म हो गई. नहीं, इट इज आल्सो गुड कि भाई आप ड्रॉप हो, आपको मालूम, हम्बल डाउन हो जाते हैं आप थोड़ा, आपको एक समझ में आता है कि हाँ भाई हम चढ़ रहे थे, एकदम से दुनिया हमें नीचे कर दी, वी हैव टू अंडरस्टैंड कुछ तो गलत हो रहा है. तो हमेशा अगर आपको बढ़ावा देते जाएंगे तो आप कभी ऐसा ही आप इमोर्टल, आपको लगेगा कि मर ही नहीं सकता या मैं गिर ही नहीं सकता. तो कभी कभी रियलिटी आपके सामने लाने के लिए आपको ड्रॉप करना जरूरी है, एंड दैट्स व्हाट इट इज. अब आप लोग बोलेगा विराट कोहली ने ऑलरेडी इतना कुछ अचीव कर लिया था वो टाइम पे कि हम अगर ड्रॉप भी करते थे उसको तो वो हमें मालूम है वापस आता था, नहीं करते तो भी हमें मालूम था कि वापस आता था. तो वैसा मेंटालिटी पहले आप बनाओ. तो आप मेंटालिटी नहीं है आप में, तो आप क्या बनाओगे आप फिर? In fact, he has been the domestic bowler for the last 10 years. Yeah, Amir Hamza की बात हो रही है. The reason why their players who have been potential don't develop in top, एक आपको मौका ही नहीं देता है. Exactly, I completely agree with that. Like आप learn and evolve होने का टाइम ही नहीं दोगे, और आप फिर और खुद डोमेस्टिक उन खेल लोग के नहीं छोड़ दे. करते भाई, खुद उन लोग लर्न इवॉल्व नहीं हो रहे. लाइक उन लोग खुद जाके प्रैक्टिस में अपनी गेम को ऊपर नहीं करवा रहे, दूसरे लोगों से डर है ना, एक्सपोज हो जाएंगे अगर डोमेस्टिक खेलने आ गए ये लोग, तो एक्सपोज हो जाएंगे बहुत बुरा. वो कौन प्लेयर था, यूनिस खान था, कौन था, उन्हें बोला था कि भाई मेरी फॉर्म ही नहीं चल रही थी, कुछ लग रहा नहीं था, ये वो उन्हें ड्राविड को कॉल करा था. Was it Yunus I Khan? think यूनुस खान, शायद Yeah, यूनुस खान या मोहम्मद यूसुफ शायद. I don't One of remember the it. two. Yeah, I think it was Yunus Khan, and I think it was Dravid that he called. There's something like that. Like, like वो सब like improvement के लिए करते रहे. They talk to other people and stuff like that. Like आप जब खेलते हैं इंडिया के अगेंस्ट, आप पूछो फिर, आप ठीक हो, आप साइन वाइन फोटो वोटो खींचाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप पूछो भी लाइक विराट कोहली से उसमें क्या प्रॉब्लम है, लाइक आपका क्या टेक्निक है, इफ योर पावर, like there has to be levels. When like Virat Kohli now, he doesn't like, he focuses on game this and that, but he does, I'm sure he asks around, he like probably talk to Dhoni, probably talk to Sachin, whatever, I'm assuming. He doesn't look at अब जब कोहली का नहीं चल रहा था, बाबर ट्वीट कर this too shall pass.
क्या बोलूं उसका like tweet का like at that. I mean, जो भी हुआ ठीक है, it's fine, but like I'm just saying at that time like just leave him alone. Private में उसको message कर दो, ये वो क्यों public में भाई आप कोहली अगर एक डाल दिया ना ट्वीट, फिर भी वाजिब हो जाएगा वो कि हाँ भाई कोहली आपको बोल रहा नहीं है उन्हें कि just keep नहीं, us. I don't think उन्हें करेंगे because अगर करेंगे नहीं तो नहीं नहीं, private I'm saying में। अगर कोहली कर रहा भी तो it will make sense. अगर आप कर रहे हो तो it doesn't make sense. नो बट एट दैट टाइम यही तो था राइट, यही तो इसलिए लोग वो टाइम पे पकड़े नहीं, बिकॉज बाबर आजम जो है टॉप पे था वो टाइम पे। Also, I clearly remember Shine doing catching practice with white ball during the last test, so that pretty much shows their intentions. Yeah, I mean, Yeah, that also he didn't play that third test. They called them out, the Australian commentators. They said, "Why the hell is Shaheen not playing this third test match? Why is he preparing for the T20 series where he's captain while there's a test match going on? Why is he not playing? Your team is losing 2-0. At least have some shame, make it 2-1." This is what the commentators said, not me. The Australian commentators called him out at that time. So yeah, I mean, yeah. But first, it was a great show, man. I really enjoyed it. Thank you. yeah, I mean, all of these comments, Mithun bhai, ABC, Adhyan and Ibrahim bhai, as always, like उनके बारे में तो जवाब नहीं. Vinay, Shakil bhai, sorry, आपको नहीं ignore करी, but we were talking more about Pakistan context today and thing. And Muzammil bhai also chipped in from Ahmedabad, so it's very good to see everybody. Hope everyone is healthy and good, and we'll come back tomorrow as well. But take care everybody. For now, me and Musa will be signing off. बात करते रहेंगे और आप लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिए क्रिकेट के बारे में. अगर आप चर्चा करने कमेंट्स हम लोग पढ़ते हैं, जैसे आप देख सकते हैं. एंड वी आर ऑलवेज हियर इन देयर. प्रोनाउंस माय नेम अध्ययन. अच्छा अध्ययन. Okay, so the other Y is silent. Adhyan. Yeah, Adhyan bhai, thank you so much everybody, and have a rest of a good evening. Thank you.